So very good morning to everybody. Welcome back to your live virtual classes. So firstly, I would like to wish everybody a very happy Chartered Accountants Day. And So to very good all the morning to students, everybody. Welcome back to wishing your you live a virtual happy CA classes. day. So So because firstly, I you're would all like the to wish upcoming Chartered everybody a very Accountants. happy So Chartered Accountants it's Day. very So great very to be good morning part to of everybody. this Welcome particular back to your process. live Because virtual through classes. this, So firstly, I I've would like been to wish everybody connected a to very many happy students, Chartered and Accountants it's Day. really So very good. good So I'm morning very to proud everybody. to be a Welcome back Chartered to your Accountant live and virtual sharing classes. my So knowledge. firstly, So I it's would like been to wish everybody connected a to very on that happy note. Chartered So we Accountants Day. start So out with very our good particular class, the paper one accounting. We are in module 1, handling chapter number 4, inventories. Okay. So coming back, what did we learn in the last inventories class? So in the last inventories class, we learned that what is inventory? Inventory is an asset. It is classified as a current asset for a business. For any business, it can be a manufacturing or it can be a trading. So since it is classified as a current asset, the meaning is an inventory can be sold within a period of 1 year, within one accounting period. This particular stock that a but a manufacturing concern or a trading concern has with it will be converted into cash. उसको हम sell करके 1 year के पहले ही हम cash में उसको realize करते हैं. So this is why we classify inventory as a current asset. So inventory का balance होता है debit balance. तो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चैप्टर में बताता है कि यू हैव टू शो द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस. तो यहाँ पे हमने दूसरी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है व्हाट इज कॉस्ट. सो द कॉस्ट मीन्स दैट it is the purchase cost. It involves various costs. So what are the various costs? The cost at which you are purchasing the item. If you are going to manufacture, the conversion cost of it you are going to add. And then if any other storage and transportation cost or packing material, that particular costs are there, that also you will be adding it. And this will give you the final cost. Now coming here, there are few exceptions like exclusions, like you have to subtract something from the cost. What are they? The first thing we saw in the other example, that is your illustration number 6, that there was trade discount. This trade discount should be subtracted because that's very evident. When you want to purchase more, the seller will give you a discount. So that is not a part of your cost. You are subtracting it. Now next comes the discussion for the taxes. So I had doubts like coming up in the class. Why are you adding the tax here, ma'am? Correct? So now coming back, why are you adding the tax here? हम क्यों टैक्स को ऐड कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे. सो जनरली मैंने बताया कि टैक्सेस जो होता है 2 कैटेगरीज का होता है. फर्स्ट कैटेगरी जो वाला टैक्स आपको रीइंबर्समेंट यानी यू कैन टेक अ क्रेडिट. आप कब क्रेडिट ले सकते हो उसको कॉस्ट से यू आर नॉट सपोज टू इंक्लूड इट. ओके my dear students, please listen very carefully. Taxes can be of 2 types. One tax is reimbursable tax. The other tax is non-refundable or non-reimbursable tax. The non-refundable tax का मतलब है कि आप टैक्स को पे करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को परचेज करने के टाइम पे, तो उसका रिफंड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा. करेक्ट. तो उस तरह का कुछ टैक्स है, उसको आप कॉस्ट के साथ ऐड कर देनी चाहिए. Okay, you are supposed to add the tax which is not refundable along with the cost. Why? Because you have already paid the tax to the government and now you cannot get a reimbursement. उसका पैसा आपको वापस नहीं मिलता है, इसलिए उसको आप कॉस्ट में ऐड कर देते हो. पॉइंट 1. आई एम कमिंग देयर संदीप, प्लीज वेट. पॉइंट नंबर 2, जीएसटी होता है रिफंडेबल टैक्स. बिकॉज आप अभी पे करने से नेक्स्ट मंथ आप उसको क्रेडिट के नाम पे ले सकते हो. सो वॉट एवर यू आर पेइंग यू कैन टेक द क्रेडिट एंड यू कैन गो अहेड. तो जीएसटी होता है रिफंडेबल टैक्स. तो जो रिफंडेबल टैक्स ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूड किया है उसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं. रिफंडेबल टैक्स को कब सबट्रैक्ट करते हैं? जब हम टैक्स को ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूड किया है बट ये वाला टैक्स रिफंडेबल आपको मिलेगा तो तभी आप उसको सबट्रैक्ट करते हो. जीएसटी होता है रिफंडेबल टैक्स टेक्निकली. बट माय डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 6 पे वो टाइपिंग एरर था, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था, वो वाला एक सेंटेंस मिस हो गया था. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन. आई टोल्ड यू इन दिस केस द जीएसटी इज नॉन रिफंडेबल. एक पर्टिकुलर सेंटेंस था उस क्वेश्चन पे जो टाइपिंग एरर के वजह से डिलीट हो गया था, वो था जीएसटी इज नॉन रिफंडेबल. तो उस टाइम पे व्हाट विल यू डू? यू हैव टू ऐड इट बिकॉज आपको रिफंड मिल रहा है क्या? नहीं, कुछ रिफंड नहीं आएगा. तो ये होता है कॉस्ट के कंपोनेंट, तो उसको ऐड कर देनी चाहिए.
Is this clear to everybody? Why are we adding in that particular thing? Yeah, somebody else also asked. Hmm. Okay, Tanisha. Yes, Akshat. नॉन रीइंबर्सेबल टैक्स को हम ऐड करते हैं, करेक्ट. ओके. विच एवर टैक्स इज रीफंडेबल, आपको जो टैक्स रीफंड मिलता है दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए, बट उसके लिए कंडीशन क्या है? उस टैक्स का अमाउंट कॉस्ट में इंक्लूडेड है ऑलरेडी. इफ नॉट इंक्लूडेड तो उसको कुछ भी मत करो. क्लियर? What is that I told you? मैडम, वो टैक्स इफ इट इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड, टैक्स नहीं इंक्लूड हुआ है मैडम कॉस्ट से, तो वो रिफंडेबल है, तो टैक्स को इग्नोर कर दो. बट इफ द टैक्स अमाउंट कॉस्ट में इंक्लूड हुआ है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. सो प्लीज सी, फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉस्ट है 100 रुपीज, इस कॉस्ट में 2 रुपीज है टैक्स का वैल्यू. क्या है? इस कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है 2 रुपीज वैल्यू, तो ये कॉस्ट है टैक्स के साथ. सो इट इज टुगेदर विद द टैक्स. केस वन है नॉन रिफंडेबल. ये नॉन रिफंडेबल टैक्स है, तो मैं क्या करना है? व्हाट शुड आई डू? इस 100 रुपीज को 100 रुपीज ही लिखना है, बस. क्लियर? अब मेरा पास रिफंडेबल टैक्स है, बोल रहा है क्वेश्चन पे दिस 2 रुपीज इज रिफंडेबल, तो अब क्या करना है? आपको 2 रुपीज को माइनस करके 98 को कॉस्ट से लेना है. यू हैव टू कंसिडर 98 एज द कॉस्ट. ये वाला बात समझ में आ गया? 100 रुपीज है कॉस्ट, उसमें 2 रुपीज टैक्स को इंक्लूड किया है ऑलरेडी. तो इंक्लूड किया है तो क्या करेंगे? नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो उसे वैसे ही छोड़ो, बिकॉज नॉन रिफंडेबल टैक्स कॉस्ट के कंपोनेंट ही बनाता है. ऑलरेडी 2 रुपीज इसमें है, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ रहा हूं. सो नॉन रिफंडेबल टैक्स केस में 100 रुपीज होता है कॉस्ट, बट वो रिफंडेबल टैक्स होने से वो 2 रुपीज कॉस्ट नहीं बनता है, बिकॉज 2 रुपीज आपको फिर मिल जाता है वापस. सो इसको आप हटा के 98 रुपीज कॉस्ट में दिखाते हो. सो दिस इज द पॉइंट. Yes, Tulsina, that is the case. ये होता है point. Now, let me take another case, okay? May I will show you another case here. So, अभी है cost 100 रुपीज. इसमें टैक्स कुछ इंक्लूड नहीं हुआ है. तभी आई एम टेकिंग टैक्स का वैल्यू 2 रुपीज. ओके. ओके, 100 रुपीज कॉस्ट है, टैक्स का 2 रुपीज है, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलर कॉस्ट. Okay, tax is taken separately 2 rupees. If the question says it is refundable, what is? If it is refundable, इसको don't even consider. Cost होता है 100 rupees. Cost will be 100 rupees if you have the word refundable. क्यों मैडम? टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, आप भी इंक्लूड मत कीजिए, बिकॉज वो है रिफंडेबल. तो मैं कॉस्ट के साथ नहीं ऐड करना है. लीव इट. ओके. तब सेकंड केस है नॉन रिफंडेबल. मैडम, इसको नॉन रिफंडेबल, मेरे को ये टैक्स का 2 रुपीज नहीं मिलेगा वापस, तो अभी इसको कॉस्ट के साथ ऐड कर दो. नॉन रिफंडेबल का केस. तो आप क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपको ये बात समझ में आना है कि टैक्स इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है या नहीं. इंक्लूडेड होने से क्या करना है? ओनली इफ इट इज रिफंडेबल उसको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके. इफ नॉट इंक्लूडेड, रिफंडेबल को कुछ मत करो, इग्नोर कर दो, नॉन रिफंडेबल को जस्ट ऐड कर दो. That's all. But if you ask me, madam, ये कैसा देगा? How will they give it as an example in the question? They will give you percentage. What will they give you? Just सिर्फ percentage they will give you. So in the illustration number 6, वो क्वेश्चन पे नॉन रिफंडेबल टैक्स दिया था, करेक्ट था? सो दिस केस नॉन रिफंडेबल टैक्स हैज बीन गिवन. 100 रुपीज है कॉस्ट, उसमें टैक्स नहीं था, तो नॉन रिफंडेबल बनाने से यू एडेड, आपने ऐड किया है. सपोज उसी क्वेश्चन पे जीएसटी रिफंडेबल लिखा है, तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं, कुछ मत करो, इग्नोर कर दो. टैक्स का कंपोनेंट को डोंट टेक इट एट ऑल.
Is this clear? Ma'am, in illustration 6, it is written as goods received from suppliers subject to trade discount. Subject to का मतलब है कि this tax is there already. Okay? So that is why we are taking and we are now subtracting and giving. Yes, if non-refundable, add. Okay, so now leaving this apart, let us actually give a fast brush up and then I will take that illustration number 8 also. So coming back to the point, so inventory of a manufacturing concern. Okay, Tulsinath. So coming back, inventory for a manufacturing concern can be of 5 types. फर्स्ट है रॉ मटेरियल जो हम ये कॉटन शर्ट बनाने के लिए कॉटन यान को परचेस करते हैं और फिर उसको वर्क इन प्रोसेस में वी कन्वर्ट इट एंड देन फाइनली वी गिव इट आउट एज फिनिश्ड गुड्स और इस शर्ट को हम पैकिंग करने के लिए पैकिंग मटेरियल को भी यूज करते हैं वो भी हमारा इन्वेंट्री के कंपोनेंट बनते हैं एंड द लास्ट पार्ट इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स आई हैड वन पर्टिकुलर स्टूडेंट राइटिंग टू मी एंड आई फॉरगॉट to give you my mail ID, which I will write it lastly in the board, on the board while finishing the class. So I had one particular doubt wherein the student was very curious and he was asking about what does nuts and bolts be classified as. Nuts and bolts is something that is used generally with everything. It goes with the machinery also. It goes with the finished good also. So if that is going to be the case, then you have to take it Tulsi Nath. So now if you have to take it, you will have to show it as a part of the inventory only. Okay, but if the stores and spares are used towards one particular asset, then it will be called as the machinery. ये तो क्लियर है. तो हम अगला वी कम टू द ट्रेडिंग कंसर्न. सो ट्रेडिंग कंसर्न में दो तरह का स्टॉक हो सकता है, ट्रेडेड गुड्स यानी पैकिंग मटेरियल. तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि हम इस सब इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे. Okay, now with that we started with methods of inventory valuation. Correct? वो methods of inventory valuation में historical और non historical दो broad cases था. इस non historical में हमने देखा adjusted selling price method. तो पिछले क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7 तो किया है. तो हमने किया है दिस एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. सो हाउ डिड वी कंप्यूट एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड? ये सब मेथड्स है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. ओके, व्हाई आर वी डूइंग ऑल दीस मेथड्स? टू फाइंड आउट व्हाट कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. तो यहाँ है सेलिंग प्राइस दिया है. सो सेलिंग प्राइस से आप प्रॉफिट को निकालना है. व्हाट शुड यू डू? फ्रॉम द सेलिंग प्राइस यू शुड सबट्रैक्ट द प्रॉफिट टू गेट द cost of the closing stock. तो ये दोनों examples में, in these two examples we have done the same thing. Step number 1, we opened a trading account. In that we entered opening stock if it is given, then purchases value, sales value and closing stock. In this example, the closing stock was given at the selling price. And what was asked? What is the cost price of the closing stock? This was the question. So step number 1, we prepared the trading account. We found out what is the gross profit. Step number 2, we found out the gross profit percentage. What is the formula? Can somebody tell? Gross profit divided by sales plus closing stock at the selling price into 100. So whatever you learnt earlier, not just profit by sales into 100. यहाँ sales में दो components है, normal sales, closing stock दिया है वो भी selling price में. If closing stock दिया है cost price में, exclude कर दो, just take the sales. Okay? In illustration 6, illustration 7, आपको closing stock दिया है selling price में, तो आप वो percentage compute करने के लिए डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा. दिस इज स्टेप नंबर 2. आफ्टर यू गेट द परसेंटेज, फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप, व्हाट यू हैव टू डू, क्लोजिंग स्टॉक में उस परसेंटेज को अप्लाई करने के बाद आपको प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में कितना है मिलेगा, उसको सबट्रैक्ट करने से कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आपको पता जाएगा. यू विल कम टू नो अबाउट दैट. So that is how we finished the illustration number 6, illustration number 7. Clear? Now we did illustration number 1. Illustration number 1 है historical method में, okay, goods interchangeable नहीं है. Goods interchangeable नहीं है. That means what, madam? I gave you an example. I am manufacturing a marker. I am manufacturing a remote. ये दोनों होता है non interchangeable. उसको हम interchange नहीं कर सकते हैं. तो उस
दैट टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए आप कौन सी मेथड को यूज करते हो? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बहुत इजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में वी विल बी यूजिंग, और वी हैव ऑलरेडी डन दैट, PQR दिया है। P, आइटम P को कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से वॉट एवर इज लेस वी हैव टेकन, एंड द नेक्स्ट वन Q वी हैव सीन इट इज सेम बोथ, सो वी हैव टेकन द सेम वैल्यू, एंड R वी हैव सीन बोथ द वैल्यूज विच एवर इज लेस वी हैव टेकन। ओके my dear students, please remember that cost can be less or net realizable value also can be less. Every time only the cost should be less. ऐसा कुछ नहीं है, cost 100 हो सकता है, net realizable value 80 rupees भी हो सकता है, because sometimes when the demand for the product falls, the selling price will also fall. Okay, so cost can be more, उस time पे आपको मिल जाएगा loss, आपको हो जाएगा loss. Is this clear? So a little bit let me take the doubts and then I will go. Okay. Okay, can you please repeat the gross profit percentage formula? Divyani, the gross profit percentage formula is gross profit divided by sales plus closing stock at the selling price. If closing stock is given at cost, Mr. Deepak, please exclude it. मैम एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन सी मेथड पूछते हैं? उसका सभी मेथड पूछने का इक्वल चांसेस है रचना, सो डोंट वरी। अभी हम दी लीफो फीफो वेटेड एंड सिंपल एवरेज करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट इज क्वाइट इजी। यस, आई विल टेक द लीफो फीफो. Tulsinath, you have to give me a little time, okay? I know you are very curious and enthusiastic. They will upload. I have informed Priyambada. She will do it. She told in the next 5 to 10 minutes she is doing it. Okay? Sandeep, ma'am, कौन सी ऐसी goods जहाँ पे tax refund नहीं मिलता है? वो होता है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का कुछ सुना है? ये होता है इंटर स्टेट का टैक्स। आप बैंगलोर में गुड्स को खरीद के चेन्नई में लेके आ रहे हो, सो आपको वो क्रॉसिंग ऑफ द बॉर्डर में ऑक्ट्रॉय यानी स्टेट टैक्स, सेल्स टैक्स को पे करनी चाहिए, तो वो होता है नॉन रिफंडेबल टैक्स। How to identify if the tax is included or not? Usually tax will not be included in the question, so you will only have to include it. Okay, Deepak? Okay, I think yeah. Hitesh, what is your problem? Conclusion, trading account is cost. Yes, yes, Hitesh, you're right. मैम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्या? नो पूजा, यू कैन डू इट इन एनी फॉर्मेट. ओके, यू कैन डू इट इन योर फॉर्मेट और यू कैन डू इट इन द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट ऑल्सो. हितेश जस्तोनी, इट इज trading account always shown at the cost except for sales. Okay, but technically in our illustration, only in that illustration it is shown at that 62,500 is shown at the selling price. Okay, that's okay. So now coming back, somebody asked me, I think Akshat Jain, you asked me the trading account how to do this particular value, correct? So whenever there is an abnormal item, I told you उसका cost को लेके you have to subtract it. वो कहाँ पे included है, ये other purchases और opening stock, you have to read the question and identify, and sales price को total sales से you have to remove it. तो illustration number 8 पे एक abnormal item था. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे एक abnormal item था, उसका वैल्यू कॉस्ट इनिशियली था 50,000. ओके, और इसका सेल्स प्राइस था 45,000. 50,000 और 45,000, क्लियर? तो सेल्स प्राइस को आप सेल्स में से यू आर सबट्रैक्टिंग इट. बट व्हाट अबाउट द कॉस्ट मैडम? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दिस आइटम इज इंक्लूडेड वेयर? ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड किया है, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 1,45,500. 1,42,500. सो मैडम, मैं जस्ट 50,000 को सबट्रैक्ट करने से हो जाएगा क्वेश्चन? हो जाएगा, पर यहाँ एक और स्मॉल एडजस्टमेंट है. उस एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? ये 50,000 का कॉस्ट दे हैव रिटन इट डाउन, उसको थोड़ा कम कर दिया है. क्यों कम कर दिया है? वो हो सकता है किसी भी रीजन का, वो स्लो और नॉन मूविंग स्टॉक हो सकता है. तो हमको एक्स्ट्रा 17,500 को रिड्यूस करना पड़ेगा. तो अब ये वाला कॉस्ट बन जाएगा एक्चुअल रिटर्न डाउन कॉस्ट 32,500. तो 1,42,500 minus 32,500 will give me 1,10,000 actual opening stock का value without the how will identify abnormal items? Abnormal items are those which are beyond your particular, what to say, abnormal loss like theft हो सकता है, fraud हो सकता है. कैसा, how will you identify? You need not identify. Question में दिया जाता है. इस question illustration number 8 में
क्लू दिया था bearing this transaction. The problem is here they have told इस transaction के बावजूद leave that इस transaction है abnormal उसके बिना सब कुछ so the remaining others are all normal transactions. Clear everybody? Yes. So this is what we spoke or we discussed in the last class. I think we covered 4 illustrations, 6, 7, 8, and illustration number 1. Today we are going to go ahead with the most important concept. Okay, then don't ask me, madam, अब तक कुछ पढ़ाया वो important नहीं है क्या? सब कुछ important है, okay? But ये LIFO, FIFO is quite important. वो उसके लिए तो बहुत tables भी बनाया है आपका textbook में. तो definitely when you look at that, no, you will feel okay. There is something इसमें कुछ है. It is very difficult. All of this will come only here. So now we are going to talk about the historical method of finding the cost. उसमें से 4 different methods है. बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो ओके उतना डिफिकल्ट नहीं है सो अंडर द हिस्टोरिकल मेथड you have the FIFO, you have the LIFO, you have the simple average method and you have the weighted average method. ओके तो ये मेथड सब क्या है oh sorry today 2nd of July very important okay good so ये मेथड सब क्या है to find the cost of the inventory तो ए इन्वेंट्री बन जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक ओके टिल नाउ हमने देखा है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से हाउ विल बी फाइंड आउट द कॉस्ट एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से हाउ विल बी फाइंड आउट द वैल्यू ये दोनों हो गया है अभी बाकी है all these 4 methods okay now we will learn the 4 methods but before that let me tell you there is another small concept so this particular concept talks about the method of stock taking or how do you record the inventory इन्वेंट्री रिकॉर्ड व्हाट इज दैट मैडम इन्वेंट्री तो सभी जगह पे एक ही तरह में रिकॉर्ड करते हैं ना नहीं देयर आर 2 टाइप्स इन विच द स्टॉक इज रिकॉर्डेड स्टॉक का रिकॉर्ड का मतलब क्या है मैडम व्हाट इज दिस माय डियर स्टूडेंट्स इस मेथड्स को यूज करके हम स्टॉक का अमाउंट लिखते हैं बट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का मतलब है क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक को कैसा पता लगाते हैं हाउ डू वी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड एज इज थ्रू द इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम इसमें होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री टेकिंग यानी परपेचुअल इन्वेंट्री टेकिंग ओके पीरियोडिक इन्वेंट्री टेकिंग परपेचुअल इन्वेंट्री टेकिंग तो ये क्या हो सकता है मैडम periodic inventory will be used by small organizations okay periodic inventory जहां यूज करते हैं फर्स्ट वन है small enterprises because it is cheap कॉस्टली नहीं है बहुत चीप है तो ये पीरियोडिक इन्वेंट्री का मतलब क्या है आपने जो देखा है इन बिग लाइक इन योर शॉप्स एंड नॉर्मल थिंग दे विल सेल ईयर एंड में सब कुछ उसको क्लोज करते हैं शॉप को क्लोज करके वो क्या बोलते हैं इन्वेंट्री टेकिंग है इन्वेंट्री को हम स्टॉक टेकिंग बोलते हैं करेक्ट द सेम थिंग इज पीरियोडिक इन्वेंट्री कुछ फ्रीक्वेंसी में क्वार्टरली हो सकता है 6 मंथ्स बाई ईयरली हो सकता है यानी ईयरली एनी ऑफ द पीरियड्स व्हेन द बिजनेस शट्स डाउन बिजनेस को क्लोज करके उस समय में प्रोडक्शन नहीं होता है सेल्स नहीं होता है सब कुछ स्टैंड स्टिल क्लोज कर देते हैं शट डाउन कर देते हैं प्रोसेस को बिजनेस को शट डाउन करने के बाद फिजिकली स्टॉक को काउंट करते हैं फिजिकली स्टॉक को काउंट करने के बाद क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं वो होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड सो पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड कौन यूज करते हैं स्मॉल कंपनीज क्योंकि ये चीप मेथड है क्यों ये चीप मेथड है बिकॉज इधर क्वार्टरली यानी हाफ ईयरली यानी एनुअली एक बार
31 मार्च होने के टाइम पे सब कुछ रोक के दे विल स्टॉप द बिजनेस. ओके, दे विल स्टॉप द बिजनेस. शटिंग डाउन का मतलब है बिजनेस को शट डाउन नहीं, वैसा नहीं है. वो 2 days के लिए वो स्टॉप करते हैं. ओके, मे बी आई शुड नॉट यूज द वर्ड शट डाउन. द बिजनेस विल बी closed for 2 to 3 days, and physically they will sit and count the stock. Why are they doing this? To identify the quantity. Okay, but my dear students, yeah, halt you can say. So my dear students, what happens इस इन्वेंट्री मेथड में आपका कंट्रोल, इन्वेंट्री में कंट्रोल बहुत कम होता है. वही मैडम यू आर टेलिंग लाइक दैट बिकॉज हम जो परचेज करते हैं उस ईयर में there is always a possibility of theft, there is always a possibility of fraud being done by the store manager. but उसका इंफॉर्मेशन आपको कब मिलेगा? जब जब आप फिजिकली ईयर एंड में काउंट करते हैं तब आपको मिलेगा वो डिफरेंस. तो व्हाट विल यू डू? ओके, ये तो लॉस हो गया है, मेरे को पता भी नहीं है, सो यू विल जस्ट रिकॉर्ड इट एज लॉस. ओके, बिकॉज इन्वेंट्री कंट्रोल इस सिस्टम में नहीं होता है. वही इसको हम एंड में करते हैं, इधर ये क्वार्टर एंड में, यानी हाफ ईयर के बाद, यानी एनुअल 31 मार्च एक ईयर के बाद करते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द क्वार्टर, ड्यूरिंग द हाफ ईयर कुछ लॉस हो गया फ्रॉड के कारण, थेफ्ट के कारण, यू विल नॉट नो अबाउट इट until you do this particular stock taking at the end. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो ये वाला होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. सो इस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्वांटिटी आप कैसे कंप्यूट करते हैं? ईयर एंड में, यानी क्वार्टर एंड में, यानी हाफ ईयर के एंड में आप बिजनेस को हॉल्ट करके, स्टॉप करके, क्लोज करके 3 days और 4 days के लिए फिजिकली आप स्टॉक टेकिंग करते हो. व्हाट विल यू डू? फिजिकली आप स्टॉक टेकिंग करते हो. उसके बाद आपको क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाएगा. बट कुछ लॉसेस है, वो तो हो गया, आपको कुछ कंट्रोल नहीं है इस सिस्टम पे. बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ये भी अभी भी फॉलो करते हैं क्योंकि ये मेथड चीप है. इज दिस क्लियर? एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग? How to record the inventory under the periodic method? Now can we go ahead with perpetual? Okay, now I will tell you one more thing. There is a small formula for this. इसका formula है opening stock plus purchases minus closing stock will give you cost of goods sold. So क्या madam, already we have done this, no madam? Here the closing stock will be determined properly. You will count it and then only you will take the, or you will arrive at the cost of goods sold. So यहाँ पे closing stock will be the major value. Now come here. परपेचुअल इन्वेंट्री. परपेचुअल इन्वेंट्री का मतलब है ऑपोजिट ऑफ पीरियोडिक इन्वेंट्री. इसमें स्टॉक टेकिंग करते हैं बट नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज इन पीरियोडिक. ओके, देन हाउ मैडम दे विल मेंटेन? ये वाला होता है कंप्यूटराइज्ड फॉर्म. दैट मीन्स परपेचुअल का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूअस. तो परचेज करके हमको रॉ मटेरियल मिलता है और हम उससे प्रोडक्शन को इश्यू करते हैं. तो देन एंड देयर हम जब परचेज करके हम जब इश्यू करते हैं, उसके बाद आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कंप्यूट किया जाएगा. सी, पीरियोडिक इन्वेंट्री में आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यू शुड वेट. फिजिकली काउंट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक है. ये होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री में. बट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में व्हाट विल हैपन? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में व्हाट विल हैपन? इट इज कंटिन्यूअस, कंप्यूटराइज्ड होता है. सो जब जब हम परचेज करते हैं कंप्यूटर में एंट्री लग जाता है, एंड जब हम इसको इश्यू करते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो सबट्रैक्ट होके हमको क्लोजिंग स्टॉक मिलता है एज द बैलेंसिंग फिगर. तो इस परपेचुअल इन्वेंट्री को बिग और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वेरिन बहुत सारा इन्वेंट्री होता है उसमें इंप्लीमेंट करते हैं. ये बहुत एक्सपेंसिव है रादर देन द पीरियोडिक. ये वाला परपेचुअल बहुत एक्सपेंसिव है. और फिर इसमें क्या करते हैं? फिजिकली आप करते हैं नहीं, कंटिन्यूअस बेसिस में आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं.
आप कंटिन्यूअस बेसिस में क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है. नाउ दिस फॉर्मूला यू अंडरस्टूड फॉर पीरियोडिक. इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस इश्यूज गिव्स यू द क्लोजिंग स्टॉक. तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकली डिटरमाइन नहीं करते हो एंट्रीज के वजह से. इतना मेरा ओपनिंग स्टॉक है, इतना मैंने परचेज किया है, इतना इश्यू कर दिया है, तो रिमाइनिंग होता है क्लोजिंग स्टॉक. बट इन पीरियोडिक कौन सी फॉर्मूला हमने यूज किया है? ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेजेस भी पता है, क्लोजिंग स्टॉक को भी हम पता लगा है, वी हैव काउंटेड एंड गिवन. सो ये होता है, रिमाइनिंग होता है हमारा इश्यूज यानी कॉस्ट ऑफ द गुड्स, कॉस्ट ऑफ द गुड्स वी हैव प्रोड्यूस. सो ये वाला होता है कॉग्स. क्लियर एवरीबॉडी? तो इन दोनों इन्वेंट्री सिस्टम्स में ये फर्क होता है. पीरियोडिक इन्वेंट्री आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. इफ यू हैव एनी डाउट्स गो बैक अगेन एंड सी द वीडियो, बिकॉज आज हम इन्वेंट्री लेसन को कंप्लीट करना है. आई हैव टू डू द इलस्ट्रेशंस. ओके, सो कमिंग बैक, यस. सो इश्यूज में क्या आएगा? इश्यूज में भी क्वांटिटी आएगा. प्लीज तनीषा, प्लीज वेट, व्हेन वी डू द क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड. आपको कुछ टाइम देना चाहिए. ओके, सो नाउ कम बैक हियर. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हम यूज करते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस में. ये होता है चीप मेथड, बिकॉज इसको हम क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली, इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकली काउंट करते हैं इधर क्वार्टर एंड में यानी हाफ ईयर एंड में यानी ईयर के एंड में वी डू द फिजिकल स्टॉक टेकिंग. ओके, तो वो स्टॉक टेकिंग के बाद ही हम क्लोजिंग स्टॉक को डिटरमाइन करते हैं. बट ड्यूरिंग द ईयर इफ देर इज एनी लॉस, हम उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी लॉस हो चुका है. कुछ रैट्स आके इन्वेंट्री को खा लिया है तो हो गया है. हम जब इन्वेंट्री को फिजिकली स्टॉक काउंट करके हम लेते हैं उस टाइम पे ये वाला लॉसेस हमको पता चलेगा. तो यहाँ पे इन्वेंट्री पर कंट्रोल कम होता है. बट यानी ऑन दी ऑपोजिट, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक को कंटिन्यूअस बेसिस में इवैल्यूएट करते हैं. जब जब आप इश्यू करते हैं, इश्यू का मतलब क्या है? आप परचेज करके उस रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे देते हो. सो वो दे देना को हम इश्यूज बोलते हैं. ओके, सो स्टॉक का मूवमेंट है, स्टॉक अंदर आ गया, परचेजेस है, स्टॉक को हम प्रोडक्शन के लिए दिए हैं, उसको हम इश्यूज बोलते हैं. दैट्स ऑल. इज तनिषा योर डाउट क्लियर? नाउ इस तरह का परपेचुअल में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है ये. इस कंप्यूटराइज सिस्टम में आप जब जब परचेज करते हो एंट्रीज बन जाएगा, आप जब प्रोडक्शन के लिए उसको दे देते हो उस स्टॉक को, इश्यूज के तरफ में आएगा. सो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन क्लोजिंग स्टॉक को देन एंड देयर आप डिटरमाइन करते हो. बट टेक्निकली कुछ लॉस हो गया तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, तो इन्वेंट्री में बहुत और बढ़िया कंट्रोल रख सकते हैं आप. ओके, इस मॉडल को हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पे यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है. इज दिस क्लियर? तो अभी हम फीफो लीफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज को दोनों ही परपेचुअल इन्वेंट्री और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम्स में दोनों ही जगह पे यूज करते हैं. इसका अलग अलग पैटर्न होते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री में. ओके, पीरियोडिक इन्वेंट्री में हम फीफो लीफो सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फीफो एंड लीफो वॉट एवर दिस फोर मेथड्स में हम क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे, अंडर विच मेथड? फर्स्ट मेथड इज द पीरियोडिक इन्वेंट्री टेकिंग पे. Okay, so now I'm going to very quickly share across the illustration number 2 for everybody. मैं उसको बोर्ड में लिखने के बाद I will come back here. Okay, please see everybody illustration number 2. A manufacturer has the following record of purchases of a condenser which he uses while manufacturing radio set. Abhi, my dear students, to use this historical method, under these four methods will be used when the goods are interchangeable. मैंने बोला है गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आएगा. तो गुड्स इंटरचेंजेबल होने से ही हम इस चारों मेथड से उसको कंप्यूट करना है. ओके, नाउ यू विल टेल मी ऑल फोर. नो, क्वेश्चन में कौन सा मेथड पूछ रहे हैं उसके हिसाब से यू विल डू दैट. ओके, नाउ मैडम गुड्स इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है? वेरी सिंपल. इस मार्कर को मैं मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस मार्कर? कैन यू टेल मी?
What are the raw materials for manufacturing this particular marker? Anybody? Ink, okay. Only ink, with the ink it will come. Next, the plastic, this particular frame, you need the cap, and when you open, you need this fitting also, you need the tip, you need many things. Correct? Correct, correct, correct. Okay. तो हम रॉ मटेरियल्स को एंड फिनिश्ड गुड्स को मिला के इंटरचेंजेबल बोलते हैं बिकॉज वॉट एवर वी आर परचेजिंग एज रॉ मटेरियल्स इट विल हैव टू गो इन टू दिस पर्टिकुलर फिनिश्ड गुड्स. क्लियर? तो when you read the question, कैसा मैम, how will I identify whether it is interchangeable or non interchangeable? Non interchangeable होने से क्वेश्चन में डायरेक्टली देगा ये पर्टिकुलर आइटम्स आर नॉन इंटरचेंजेबल. ओके, इफ इट इज इंटरचेंजेबल क्वेश्चन में ऐसा बताएगा कि अभी रेडियो सेट को हम मैन्युफैक्चर करने के लिए कंडेंसर होता है रॉ मटेरियल. तो जब वो रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट्स दोनों मिला के बात कर रहे हैं, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन रॉ मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड गुड, that is a case of interchangeable goods. इस illustration में रेडियो सेट्स को बना रहे हैं बट that particular radio set can be made from the condenser. Condenser important raw material है. Is it clearly? Is it clear now? Akshit Verma, you have to wait. I will finish the question, then only you should ask the doubts. When we are going half the way, don't cut and ask any doubts. Now coming back everybody, अभी मैं यहाँ पे I am taking the information. So goods are interchangeable, okay, that I understood. अभी यहाँ पे date है, डेट में दिसंबर 4 है और वहां पे क्वांटिटी है यूनिट्स और द नेक्स्ट वन इज द अमाउंट, प्राइस पर यूनिट है. क्लियर एवरीबडी? सो दिसंबर 4 है, 900 यूनिट्स परचेज किया है 50 रुपीज. दिसंबर 10 है, व्हाट इज दिस, 400 एट 55. अभी थोड़ा मैं नीचे आती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, यहाँ तो 3 और है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिसंबर 11th है, दिसंबर 19th है, दिसंबर 28th है. दिसंबर 11th है 300 यूनिट्स परचेज किया है, वो भी 55. देन दिसंबर 19th है 200 यूनिट्स, वो है 60. एंड फाइनली वी हैव 800 यूनिट्स एट 47. तो इसका टोटल बन गया है 2600 यूनिट्स परचेज किया है. इसका मतलब है इस पर्टिकुलर टेबल में आपको परचेजेस का इंफॉर्मेशन दिया है डिफरेंट डेट्स में, इतना इतना क्वांटिटी, इतना इतना प्राइस में उसने परचेज किया है. रीड द लास्ट पर्टिकुलर लाइन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 1600 यूनिट्स वेर इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर. तो इश्यू हुआ है 1600 यूनिट्स. क्लियर? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा, आई एम स्टॉपिंग इट एंड आई एम शोइंग यू द एंटायर थिंग. यहां तक मैंने क्वेश्चन लिखा है. क्लियर एवरीबॉडी? इलस्ट्रेशन नंबर 2, डेट वाइज कुछ यूनिट्स को परचेज किया है, उसका टोटल है 2600 यूनिट्स. ईच इंडिविजुअल यूनिट को डिफरेंट रेट्स में परचेज किया है. तो परचेजेस का इंफॉर्मेशन भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइकवाइज issues ka information is also very important. So my dear students, what is the value of closing stock? Purchases minus issues. During the month of December, 2600 units I purchased, out of which 1600 units I have issued. So the remaining, the baki 1000 units is called as the closing stock. Now is closing stock ka कौन सा वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द प्राइस आई हैव टू टेक, इसके लिए हम जाते हैं इस चारों मेथड का. सो द फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू टीच यू इज फिफो. फिफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. द मीनिंग इज, अब जो आइटम को फर्स्ट परचेज करते हो उसको आप फर्स्ट इश्यू कर देना चाहिए. व्हाट इज दिस? आप जो आइटम को फर्स्ट परचेज करते हो उसमें से ही इश्यू करना है. टोटल इश्यूज यहाँ पे कैसा दिया है, 1600 यूनिट्स हैव बीन इश्यूड. तो फिफो मेथड फॉलो करने से फर्स्ट परचेज कब किया है आपने, 900 यूनिट्स ऑन दिसंबर 4th. तो फर्स्ट आप दे देते हो 900 यूनिट्स यहां से और फिर कितना बाकी होगा, 700 यूनिट्स. सो नेक्स्ट कब परचेज किए हो, नेक्स्ट इज 400 ऑन दिसंबर 10th.
तो नेक्स्ट फर्स्ट परचेज विल बी 400. इसको आप माइनस करने से 300 यूनिट्स फिर भी आपने दिया है. नेक्स्ट आप कब परचेज किए हो? 300. सो ये हुआ है दिसंबर 11th पे. ओवर. तो 1600 यूनिट्स ये तो जीरो हो गया. अभी कितना बाकी है आपके पास? 200 यूनिट्स आपने परचेज किया है दिसंबर 19th, वो बाकी है. और दिसंबर 28th 800 अभी भी बाकी है. तो ये बनता है आपका क्लोजिंग स्टॉक. ऑल ऑफ यू प्लीज सी. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होता है 200 इंटू 60 रुपीज एक ट्रांच, 800 इंटू 47 रुपीज एक ट्रांच. कितना होता है? 12,000. एवरीबडी विथ मी? 12,000. 2000 इंटू 60 कहाँ से लेके आ गया है मैडम? ये वाला बाकी है. सो 200 इंटू 60 विल बी 12,000. 800 इंटू 47 विल गिव मी 37,600. तो इसका टोटल है 49,600. यहाँ भी 1000 यूनिट्स आया है. तो आपका 1000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक इज टैलिंग करेक्ट. सो यहाँ भी 1000 यूनिट्स है बट उसका प्राइस अंडर फीफो मेथड होता है 49,600. इज दिस क्लियर एवरीबडी? What did I do? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आप जो परचेजेस को फर्स्ट करते हो उसको फर्स्ट इश्यू करते हो. तो यू विल कम फ्रॉम द टॉप. तो इश्यूज है 1600 यूनिट. सो इसको पूरी करने के लिए फर्स्ट 900 देना है. देन आई विल गिव 400. देन आई विल गिव 300. ये तीनों देने से इश्यूज खत्म हुआ है. व्हाट इज देयर विथ यू? Only 200 and 800. So this will form a part of your closing stock, which is 49,600. Ah, Akshat Jain, very good. No, Akshat Jain, this is periodic inventory system that is we are doing. What we are doing? Periodic. Then and there, you're having entries. No, totally. Issues are given at the end. So if issues are given totally at the end, it is a periodic inventory system. I will show you perpetual, then you will understand what is the difference. But this is periodic inventory. Is FIFO very clear to everybody? Okay. Now we will go to LIFO. LIFO is the opposite of FIFO. So what is this? LIFO is last in, first out. The meaning is everybody, last in, first out. In your textbook, please again don't go through your textbook. In your textbook, differently it is given. That not required. I am giving you my example. I want you to teach. I want to teach you people FIFO, LIFO, simple average, weighted average, all in the same method. Okay. So now come to LIFO. हम जिस purchases को last करते हैं उसको हम first issue करते हैं. That is the meaning of LIFO. ओके. नाउ यू टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, हम जिस परचेज को फर्स्ट इश्यू करते हैं इस 1600 यूनिट्स है ना इश्यू, इसमें फर्स्ट कौन सी वाली, विच वन विल बी गिव एनीबडी? Which one will we give? We will first give the 800. Very, very good. We will go from bottom to top. First we will give 800. Not enough. Then we will give 200. Still not enough. Then we will give 300. Okay. Abhi. All of you please see 800 plus 200 plus 300 is 1300. तो इस 400 में फुल्ली हम इश्यू नहीं करते हैं. कितना इश्यू करते हैं? जस्ट 300 इश्यू करने से मेरा इश्यूज पूरा हो गया है. तो इस 400 से हमने कितना दे दिया है इश्यूज का? 300 वी हैव गिवन. तो अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसा होता है? आई एम जस्ट राइटिंग इट ऑन टॉप. ऑल ऑफ यू प्लीज सी. द क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होता है दिसंबर 10th में 400 माइनस 300. तो यहाँ है 100 यूनिट्स, उसका वैल्यू कितना है? 55. सो 5,500 प्लस ये वाला अभी भी बाकी है which is 900 units into 50, 45,000. तो टोटल है 50,500. Clear everybody? Any doubts you have? FIFO and LIFO, first in first out, last in first out. So whatever comes in the last, that will go first. That is the meaning. Whatever comes in the last will go first. Okay, Negimi, everybody good. FIFO, LIFO clear. Am I right? What are you right? I didn't even see what is happening. Yes, you are right, Divyani. That is what is 5,500. Okay.
Yeah, it is quite easy only. If you understand everything is easy, Prabhat, why you feel it will be 100? What is that last three? B 500, 200, 300, ma'am? Oh, this one now. This is not B. This is 800. Okay. Tulsina, these are the issues. They are units, ma. I'm going from from bottom to top. No. So 800, 200, 300, 400. From 400, I'm giving 300. Why? Because my total should come to 1600. No. So that is why I'm putting like this. Yes, I am from Tamil Nadu only. Okay, so come back. My natives are not important. Question and answer is important. Now come here. The third method is simple average method. इसको हम कैसे करते हैं? How will we do? नहीं होगा. Wait, I will tell you. Please wait. Now coming back, simple average, how will we do? Simple average is very, very easy. You will simply take the average of the rates given to you in the question. You will take for simple average what you will do. कितना है rates यहाँ पे? 50 plus 55 plus 55 plus 60 plus 47. इस सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5. वही सिंपल एवरेज कितना आइटम्स है? 5 आइटम्स है. डिवाइड बाई 5. आंसर आएगा 53.4. कितना आएगा? 53.4. गुड. अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 1000 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक इनटू सिंपल एवरेज प्राइस है 53.4. सो 53,400 है आंसर. अंडर फीफो मेथड 49,600 मिला है. अंडर लीफो मेथड 50,500 मिला है. और अंडर सिंपल एवरेज मेथड 53,400 मिला है आंसर. क्लियर एवरीबॉडी? अभी हम जाएंगे लास्ट मेथड का, वो विच इज द वेटेड एवरेज मेथड. वो क्या है मैडम? वो भी इजी है, कुछ भी नहीं है. व्हाट शुड वी डू? वेटेड एवरेज के लिए हम वेट्स लेते हैं. What is this weight, madam? Simple. You will be doing, everybody please see, आप यहाँ पे क्वेश्चन पे ही क्वांटिटी प्राइस और वैल्यू एक कॉलम बनाते हो. So 900 into 50, 45,000. ऐसा you will add everything. I mean multiply करके आप for 4,000 into 555 will come as 22,000. Next, 3,000 into 55, 17,500. 2,000 into 60 will be 2,000 into 60 will be 12,000. And finally 800 into 47 will be 39,600. Okay madam, मैंने तो अभी सब कुछ किया है. Can somebody add and tell me what is the value? Somebody add and tell me. So we are doing weighted average value or weighted average price. Huh? 91. What? One of you are giving me one answers. Wait, did I make any mistake? I multiplied everything correctly, no? What is the answer? 1,36,100. Correct? This should be the answer. Everybody. 1,36,000. Oh, sorry. I wrote wrongly. 1,36,100. Is this right? 1,36,100, everybody? Okay, very good. Now we find out the weighted average price. यहाँ पे simple average price. Just take the prices, divide by 5. But here, I will take the total value 1,36,100. 1,36,100 divided by what are the number of units? 2,600. So what is the value? Can somebody tell me? 1,36,100. Divide by 2,600. How much is the value? It comes to 50. Did you all multiply this correctly? Add this correctly? I have my own doubts. It is not this value. 45,000. All of you do individual multiplication and tell me, no? Okay, this is not 39,600. This is 37,600. So this should be 1,33,100. I made a mistake here. This is 37,600. This is 16,500. It should be 1,33,100. So you people, you thought that, okay, teacher, madam is telling, so it will be correct. So I will write everything. Correct, no? Wrong. You also should try. So you people now multiply and tell me. 9,900 into thing will be 45,000. This will be 22,000. This will be 16,500. This will be 12,000. This will be 37,600. This will be 37,600. Akshit Verma, wrong answer. No.
This will be 37,600. So the total will be 1,33,100 divided by 2,600. Correct. It will be 51.19. I can take it as 51.20 approximately. This should be the answer. Everybody, if I am writing something on the board, you are also copying the same thing. No. Clear, everybody? Yes. Now, 2000 lag raha tha. Okay. My handwriting is like that, Akshat Verma. So now come to the closing stock value. 1000 units into 51.2. Kitna hoga? 51,200 is the value. 51,200. Don't 2600 कैसा आया? This is given in the question. I didn't do anything. उसका addition है 900 plus 400 plus 300 plus 200. ये सब purchase किया ना, उसका total है 2600. Now, my dear students, did you see all the values? FIFO में 49600, LIFO में 5500, simple average में 53400, इसमें 51200. Yes, you will be getting different values, Tulasina. That is why you have four different methods. If you get the same value in every method, why should you do four methods? Correct, no? So the concept here is different. For each of the method, we use different concepts. That is very important. So in FIFO, whatever comes first will be given out first. In LIFO, whichever purchases are last, that will be issued first. In simple average, weighted average, issues and purchases is not your concern. That you will, okay, Negimi, please see, simple average ka calculation is the most simple. Okay. Just you will take the price per unit. You did 5 purchases, 5 different rates. So you have taken the simple average. Just you have taken this plus 5. Like you compute your percentage, no? Like 5 subjects, 500 marks. Whatever you get, divide by 5. That you will convert to 100, no? The same thing you have done there. Simple. Ma'am, how did we get 1000? People, you are not understanding. I told you in the first while starting the class itself or this illustration, 2600 units आपने totally purchase किया है. उसमें से 1600 units given to you in the textbook. Question में दिया है, ये वाला issue हुआ है. So purchase minus issue होता है 1000 units. वो है आपका closing stock. We are doing the entire question to find out the value of the 1000 units, which is your closing stock. Okay. Okay. How to present the answer? Not this very clumsily, but do it neatly. Okay. This is how you are going to present the answer. The same way only. The issues. It is quite easy only. What is the problem with this question, Ma Sri Krishna? You find the question difficult. I taught you all the methods in one particular go. That is why you are feeling like this. But otherwise, if you do single method, also it will be easy only. Okay. Do you have any doubts with this? Everybody? I want everybody of you to answer. Any doubts with this? If not, we will go to perpetual inventory, same way. Shivam Vyas, okay. The others? Sai Pranavi, good. Karthik, good. Okay. Simran, okay. Prabhat, good. Deepak, Akshat, Pooja. Clear. Tulasinath, okay. Naina. What is that? What is Akshit? I don't know. लिफो में लास्ट का समझा दीजिए. Okay. LIFO, you want me to understand? Okay. You want me to go back? Okay. See, LIFO method है. Somebody who asked me, no, that name I don't remember. LIFO method जो होता है वो whatever आपने purchases last में किया है. Okay. So LIFO में whatever you have lastly परचेज किया है उसको आप फर्स्ट इश्यू कर देते हो. क्वेश्चन में दिया है 1600 यूनिट्स इश्यू. ओके. सो लीफो मेथड आप यूज करने के टाइम पे लास्ट में फर्स्ट 800 यूनिट्स को परचेज किया है उसको आप फर्स्ट लेते हो. फिर 200 यूनिट्स को परचेज किया है उसको आप लेते हो. फिर 300 यूनिट्स उसको लेते हो. सो 800 प्लस 200 प्लस 300 मिला के 1300 यूनिट्स है फिर. ओके.
Now this 1600 के लिए और 300 यूनिट्स चाहिए, so that you will take it from here. इसमें 400 यूनिट्स परचेज किया है, but you used और आपने इश्यू किया है 300 यूनिट्स, so बाकी इसमें होता है 100 यूनिट्स, उसका वैल्यू है 55 से मल्टीप्लाई करने से 5500, 900 into 50 is 45,000. Okay, so that is how you will be getting it. Is this clear, everybody? So now we are going to go ahead with Negimi, talk only about the subject, nothing else. Okay. So coming back, now we are going to learn the FIFO method, LIFO method under the perpetual inventory system, which is your illustration number 11 and 12. If I teach you 11 and 12, you will be able to do your illustration number 2, 3, and 4. Actually, not 2, 3, and 4, just two illustrations. 4, 5, 4 and 5. That's it. Because illustration number 2 and 3 hai isi method ka from your textbook. So you don't have to worry. I will just show you whatever we have done. Okay. So now coming back, my dear students, when you come a little down, LIFO method का explanation है. So whatever we have learnt only. See, in the previous example, इसको बदला है. This one they have given in between. जब in between issues होता है, that will become a perpetual system. So my dear students, इसको आप homework ले सकते हो, but I will do illustration number 11 and 12 both. अभी class में I will solve it. Then based on that, इसको आप practice कर सकते हो. It is the same question. The illustration number 3. अभी देखो illustration number 4. Simple average price and weighted average price यहाँ पे दिया है. Everybody please see. Simple average price, weighted average price. Simple average होता है ऐसे. You are just going to add the rates, divide by 5. You will get the value. Clear है? Everybody? Simple average. Weighted average मैंने बोला है value, you will find out the value and then do it. Illustration 5b आप illustration 11 के बाद कर सकते हो. Illustration 6, illustration 7, illustration number 8 is also done. 9, 10 is very, very easy that I will do after this. And yes, very easy, very, very important question. Everybody please see. The following are the details of a spare part of Sriram Mills. Spare part का मतलब है ये होता है use final finished goods में. तो यहाँ पे goods are interchangeable आता है. Clear everybody? Okay, madam, I found out goods are interchangeable. तो हम LIFO, FIFO किसी भी method को use कर सकते हैं. But read the question. Question में वो बताएगा कि कितना है और which particular method they will ask. Find out the value of inventory if company follows FIFO. तो यहाँ पे 4 मेथड नहीं है, एक ही मेथड फॉलो करना है, फाइंड आउट करना है FIFO मेथड. बट प्लीज सी हियर, ऑन 1/1/22 ओपन इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट ऑन 1st of January परचेज किया है 100 यूनिट्स को 30 रुपीज पर यूनिट में, और बीच में 15th में क्या किया है, आपने इश्यू कर दिया है. फिर क्या किया है, ऑन 1st of February में परचेज किया है, उसके बाद इश्यू किया है, दोनों इश्यूज है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब इस तरह का क्वेश्चन देखते हो, जब इश्यूज बीच में आते हैं, अभी हमने देखा है इलस्ट्रेशन बीच में आने वाला कुछ नहीं है. व्हाट वी सॉ, 2600 टोटल परचेज किया है, टोटल इश्यू हुआ है 1600. इस 1600 का बीच बीच में नहीं आया है. सो व्हेन टोटल ऑफ योर इश्यूज आर गिवन without giving dates in between, then that will be under periodic inventory. But if they tell you in a question that the inventory is being issued in between, purchase भी कर रहे हैं, फिर इश्यू भी कर रहे हैं, फिर परचेज कर रहे हैं, फिर इश्यू कर रहे हैं, सो इस तरह का क्वेश्चन को हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं. Okay, this is how you identify if it is a periodic or if it is a perpetual value. Is it clear? I think the system has gone into blur. Everybody, you're with me? Okay, if it is a perpetual or a periodic, did you understand how to identify? समझ में आया है everybody?
Yeah, now it got blur. Now it is okay. Okay, perfect. So now, my dear students, is perpetual inventory system में FIFO method के वजह से you should compute the, okay, you are supposed to compute the closing stock. I will tell you again. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में फर्क ये होता है कि परपेचुअल में इश्यूज बीच में आते हैं. परचेज करते हो, फिर इश्यू करते हो, फिर परचेज करते हो, फिर इश्यू करते हो, फिर परचेज करते हो, फिर इश्यू करते हो. सो ऐसा आपका क्वांटिटी सेपरेटली मेंशन किया जाएगा. ओके, बट नाउ कमिंग बैक अंडर पीरियोडिक, वो तो एक ही बार डेट्स नहीं देगा. ओनली वंस फॉर ऑल दे विल से दीज आर द टोटल इश्यूज करके दे विल गिव यू द पर्टिकुलर क्वेश्चन. इज दिस क्लियर? Now coming here, how do I solve the illustration number 7? It will be, all of you please see, don't write anything, कुछ भी मत लिखो, concentrate करो. Statement showing computation of closing stock using the FIFO method. Clear? तो आप बनाते हो एक डेट का कॉलम एंड देन यू विल राइट रिसिप्ट्स. उसमें अगेन 3 कॉलम्स विल बी देयर, क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू. रिसिप्ट्स के बाद होता है इश्यूज. आप जो इश्यू करते हो उसका क्वांटिटी, उसका रेट, उसका वैल्यू, और ये होता है बैलेंस. बैलेंस भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू. क्लियर? तो इस तरह का टेबल यू हैव टू डू. यू हैव टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ अ टेबल. Everybody clear? This is the step number 1. Now what do we do, madam? Yeah, in the value you can write amount also. This is a very big doubt. Okay, so now come back. We will see the question one by one. So the first one is on 1-1 opening inventory is 0. So how do we write this here? First in the date column we will write 1-1-2022. There is no opening inventory, 0. Receipts कुछ भी नहीं है, issues नहीं किया है, so balance is 0 again. Over. Now the next date is again 1st of January 22. Purchases. Purchases, what they have purchased, my dear students, what they have purchased or how much they have purchased. Purchases is 100 units into 30 per unit. How much? Purchases. So purchases को हम receipts बोलते हैं. Receipt आया है 100 into 30, 3000. कुछ issues है नहीं, तो अभी closing stock का balance क्या बन जाता है? The same thing. हमारे पास 100 है, 30 है, 3000 बाकी है अभी भी. Is this clear, everybody? Anybody has any doubts? What I have done, I have just made the entry on 1-1. Purchases have been done 100, 30 rupees का 3000 rupees. कुछ भी इश्यू नहीं किया है, उसके प्रायर भी हमारा ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो अब भी क्लोजिंग बैलेंस होता है 100 into 30, 3000. Yes. Now we are going to go to the next particular entry. Everybody please see the next point. What is the next point? 15-1 issued for consumption. Issue किया है कितना? On 15th January. Everybody please see. On 15th January issue किया है. So purchases में कुछ नहीं आएगा. Issue किया है 50. अभी देखो आपके पास 100 है, so in that 50 you will give for issue. हम क्या फॉलो कर रहे हैं? FIFO. so first in first out. first ये परचेज किए हैं, उससे हम 50 रुपीज दे, 50 क्वांटिटीज दे रहे हैं, तो इसका भी सेम रेट आएगा. करेक्ट? so 1500 हो गया. it is gone from you. It is gone from you. Now how much will be the closing stock? आपके पास 100 यूनिट्स थे, आप 50 यूनिट्स इश्यू किया है. आपने इश्यू किया है, इश्यू करने के बाद क्या होगा? बैलेंस स्टॉक. आपके पास जस्ट 50 यूनिट्स होगा, उसका वैल्यू है 30,500. So at the end of 15th January, after the issue आपके पास इतना ही है closing stock. Clear everybody? इतना है closing stock.
अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एंट्री. व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री एवरीबडी? हाँ, इट इज ऑन 1 फरवरी. अगेन परचेजेस किया है 200 यूनिट्स एट 40 पर यूनिट. 1 फरवरी 200 यूनिट्स 40 पर यूनिट 8000 में परचेज किया है. कुछ इश्यूज हुआ है? नहीं. नाउ प्लीज सी, नाउ प्लीज सी. ऑलरेडी मेरा पास आई हैव 50 यूनिट्स है. अभी मैंने सेकेंड लॉट को परचेज किया है 200 यूनिट्स का. सो क्लोजिंग बैलेंस में इन दोनों यूनिट्स को मैं सेपरेटली दिखाना पड़ेगा. ऑल ऑफ यू प्लीज सी. फर्स्ट आपने कौन सा परचेज किया है? इस ओपनिंग बैलेंस और जो बैलेंस है ऑलरेडी उसको फर्स्ट लिखना है. अभी कौन सा आपने परचेज किया है? 248,000 रुपीज अभी परचेज किया है. तो 1 फरवरी के एंड पे, ओके, 1 फरवरी के एंड पे इन योर हैंड्स यू आर हैविंग हाउ मच? 2 यूनिट्स आर देयर. दोनों यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में 50 यूनिट्स है, फर्स्ट बैच में 50 यूनिट्स है, सेकेंड बैच में 200 यूनिट्स है. ये है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ 1 फरवरी. कोई डाउट है आपके पास? डू यू ऑल हैव एनी डाउट टिल दिस? 1 फरवरी में यहाँ पे आपको दो दो बैचेस में मिला है. दीज आर द 2 बैचेस. आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर. यहां तक एक ही बैच था. 100 से 50 दिया है, गया. अभी 50, 30, 1500 फर्स्ट बैच है. और अभी आपने परचेज किया है 200 का बैच, वो भी यहां तक आएगा. ओके, इज दिस क्लियर? नाउ प्लीज गो अहेड. वी विल बी गोइंग अहेड. अभी देखेंगे व्हाट आर दी अदर इश्यूज एवरीबडी. व्हाट आर दी अदर इश्यूज? 15 टू 100 यूनिट्स इश्यू किया है. वेरी गुड. नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द 15 टू का एंट्री यहां तक. ओके, 15 टू का क्या हुआ है? इश्यूज हुआ है 100 का. अभी बोलो, there are two things here. There are 2 units or 2 batches here. If you follow FIFO method, is 100 ko first from which batch you will give? If you follow FIFO method, from which batch you will give? Correct. First you should give from this 50 only. So 100 will get split into the first thing 50, which is 1500. The remaining 50 from this 200. 200 का क्या वैल्यू है? 40 रुपीज है. तो यहाँ पे 2000 आएगा. तो ना अभी दिस पर्टिकुलर बैच इज गॉन. आउट ऑफ 250 दे दिया है. तो बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक होता है 150 यूनिट्स एट 40. इसका वैल्यू आता है 6000 रुपीज. कितना आता है वैल्यू? जस्ट 6000 रुपीज. अभी डिड यू अंडरस्टैंड? लीफो मेथड फॉलो करते हैं तो हम 50 रुपीज यहां से ले लिया है. करेक्ट एवरीबडी? एनी डाउट्स टिल दिस? डू यू हैव एनी डाउट्स टिल दिस? अंडरस्टूड? Yes, simple, that's all. And the last entry is again you are doing an issue which is for 100 on 20th February. 100 units को issue कर रहे हो. Very easy. Just put the date 22/22 and here 100 units you are giving. But this 100 units, my dear, will come from which part? It will come from the same 150 I have. So 40 given 4000 gone. The remaining will be 50 units, 42,000. So the value of the closing stock of 50 units is 2000 rupees. That's all. The second batch. Clear? This is the FIFO method. Do you have any doubts till this? ओके, 150 का कैसा आया है प्लीज सी. यहाँ पे इश्यूज हुआ है. ओके, कितना इश्यूज हुआ है? 100 इज द टोटल इश्यू. तो हम फीफो फॉलो कर रहे हैं. सो फर्स्ट 50 हम इससे दे देते हैं और सेकेंड 50 हम 200 में से लेते हैं. तो 150 होता है 200 माइनस 50. 200 है आपका बैलेंस माइनस 50 यू हैव गिवन. सो 150 विल बी द क्लोजिंग स्टॉक. ओके, to somebody who asked how 150 came.
Okay. Yes. All of you, please see. I will explain once again this particular question. Very important. So that is why I'm explaining again. Please see. Opening stock है कुछ भी नहीं है, so zero है. Then on 1st of January we purchased 100 units at 30. It will be 3000. कुछ भी issues नहीं हुआ है. So at the end of 1st of January हमारा पास closing stock है 100 into 30 3000. This is over. Okay. नाउ नेक्स्ट आया है इश्यूज का. इश्यूज का 15 जनवरी आपने 50 यूनिट्स इश्यू किया है. आपके पास 100 है यूनिट्स, उसमें से 50 आपने इश्यू किया है, तो आपका वैल्यू बन जाता है 50. दिस वन विल गो. सो 100 माइनस 50 लिखने से 50 आपके पास है 50 इंटू 30 1500. तो 15th जनवरी 50 यूनिट्स को इश्यू करने के बाद आपका बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक है 50. उसका वैल्यू अभी भी 30 रुपीज ही है बिकॉज इट इज अ सिंगल बैच. क्लियर. अभी देखो 1 फरवरी एक और बैच को आप परचेस कर रहे हो, उसका वैल्यू है 200 यूनिट्स और 40 रुपीज, ये आएगा 8000. कुछ भी इश्यूज नहीं है. तो अभी क्लोजिंग स्टॉक को कैसे लिखना है, दो बैचेस को अलग अलग यू हैव टू राइट इट सेपरेटली. सो ऑलरेडी आई हैव 50 30,500. this now I am adding 248,000. so there are two batches at the end of 1st of February. now come to 15th February. इश्यूज हुआ है 100 यूनिट्स का, तो फीफो फॉलो कर रहे हो, तो फर्स्ट ये 100 यूनिट्स यू शुड टेक फ्रॉम द फर्स्ट बैच. सो फर्स्ट बैच में 50 ही है, सो आई एम ब्रेकिंग 100 एज 50 एंड 50. एक आया है इस 50 से, सो ये वाला गया. क्वेश्चन से आई मीन अभी ये क्लोजिंग स्टॉक में नहीं रहेगा. रिमाइनिंग 50 को मैं 200 से ले लिया. सो 200 माइनस 50 150 होता है क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर द इश्यूज. तो इस 150 से 20th फरवरी 100 यूनिट्स को इश्यू कर दिया है. ये दोनों माइनस करने से आपको मिलेगा फाइनल आंसर 50 इंटू 40 2000. यहां तक क्लियर है? यस. You underline it, that I was underlining because you will be able to understand it. Okay. Now we are going ahead with the next question. No break, just please wait. I will give you break. Periodic system issuer is given at the end of the year. Yes, please. Ma'am, we follow this table in perpetual. Yes, you follow this only in perpetual, Hitesh. Questions are very easy. They are very confusing. Toughest question in the module itself. Okay, Negimi. You should sit and you should write your advances here. Yes. This is FIFO. Now, my dear students, let me tell you if the same question comes for LIFO. My dear students, please see if the same question comes for LIFO, मैं अब क्या करना है madam? Very, very simple. My dear students, until this the question will be the same. यहाँ तक question इस presentation इसी amounts में आएगा. Okay? So coming back, my dear students, when will this LIFO method affect you? यहाँ पे दो batches है. Please see 50 30,500 है. अभी issues हुआ है 100. If I am following LIFO method, आप बता दो. Come here everybody, please see. I am doing under the LIFO method for your benefit. Textbook में नहीं पूछा, but you people should understand. That is why I am also working out the LIFO method. अभी see 100 units are given. If it is LIFO, from which batch you will take? My dear students, which batch you will take this 100 from? 100 will be coming from which batch? First batch है 50, second batch है 200. अभी है मेरा issues 100 का. So ये वाला 100 कहाँ पे आएगा? This 100 I will take directly from the 200 batch. That's all. So it will be 40. तो 4000 गया. So you people tell me 200 minus 100 हो जाएगा, correct? So ये वाला बैच 50 30,500 वैसा ही रहेगा, और इसमें से 100 गया तो 144,000 यहाँ पे आएगा. और फिर इश्यूज है मेरे पास 100. इस इश्यूज को कहाँ से हम लेते हैं? फिर भी हम इसको लेते हैं इस 100 से, तो ये वाला जाएगा. 144,000 is gone. तो अभी हमारे पास व्हाट इज द रिमाइनिंग क्लोजिंग स्टॉक? हमारे पास रिमाइनिंग क्लोजिंग स्टॉक है फर्स्ट बैच का 50 यूनिट्स है 30 रुपीज का. 1500 इज द वैल्यू. फीफो में आया है वैल्यू 2000, लीफो में आया है वैल्यू 1500.
ओके, क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया है ये? डू यू हैव एनी डाउट्स टिल दिस? डू यू हैव एनी डाउट्स टिल योर फीफो मेथड एंड लीफो मेथड? एवरीबॉडी, तो हम इसी क्वेश्चन पे वेटेड एवरेज कैसे करेंगे, वो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसी क्वेश्चन पे वेटेड एवरेज कैसा करना है। वेटेड एवरेज इज वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और स्टेप, यहाँ तक सब कुछ सेम है, तीनों मेथड्स पे यहाँ तक सब कुछ सेम है। जब हमको दो बैच यानी तीन बैच बन जाता है, देन यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अभी यहाँ पे वेटेड एवरेज वैल्यू यू शुड फाइंड आउट। व्हाट इज द वेटेड एवरेज वैल्यू? 9500। इस दोनों को यू शुड राइट इट एंड यू हैव टू टेक इट। प्लीज सी, 9500 by 250 कितना है ये वाला? कैन somebody tell me what is the answer for this? 9500 divided by 250. It gives you 38 rupees. That's all. It gives you 38 rupees. अभी देखो नेक्स्ट इश्यू हुआ है, सो बोथ को कंबाइन कर दिया है। दे हैव कंबाइंड बोथ एंड मेड वन लॉट। इन दोनों लॉट्स को लेके एक ही लॉट में बना दिया है। दे हैव टेकन टू लॉट्स, दैट इज 50 का एक एंड 200 का एक, और वो वेटेड एवरेज प्राइस 38 में लेके आ गया। सो 250 is gone and it is made as 38. चलेगा क्या? Yes, it will चलेगा, no problem. We are supposed to find out the price only. LIFO और FIFO में नहीं चलेगा। अगला अगला you should hold it as separate batches, but weighted average में you can do it. Simple average में भी you can do it. Okay? All of you please see यहाँ पे क्या हुआ। 50 into 30,500, 200 into 40, 8,000. So इसका टोटल है 9,500। इन दोनों का टोटल है 250 रुपीज। ओके, 250 यूनिट्स। इस दोनों को डिवाइड करने में आपको मिल जाएगा 38 रुपीज। सो ये है वेटेड एवरेज प्राइस। क्लियर? ये है वेटेड एवरेज प्राइस। अभी 15 में आपने 250 से हाउ मच यू हैव इश्यूड? 100 यूनिट्स। उसका क्या प्राइस है? इट इज 3800 ओनली। तो इसको रिमूव करने से आपको यहाँ पे 150 इंटू 38 कितना मिलेगा? 150 इंटू 38 विल बी 7000, 5700। Yes, 150 is remaining into 38, which is 5700. Everybody clear? और फिर एक और इश्यू हुआ है 100 का। सेम यहाँ से हम लेंगे because there is only one batch. Again 3800 will go. अब रिमाइनिंग है 50 into 38, इसको सब्ट्रैक्ट करने से 9,900। तो यहाँ पे 50 यूनिट्स का वैल्यू है 1900। तो ये वाला है वेटेड एवरेज में, इसका वैल्यू है 1900। somebody asked me, मैडम सिंपल एवरेज का क्या? मैडम सिंपल एवरेज का दो बैचेस का कौन सा है? 30 रुपीज प्लस 40 रुपीज बाई 2। 30 plus 40 by 2 is 35. So 50 units into 35 will be giving me 1750. See, simple average का इतना कुछ टेबल you need not even do. Just take what are the two batches, उसका क्या वैल्यू है? 30 में परचेस किया है, 40 में परचेस किया है। So 30 plus 40 divided by 2 is 35. मैडम आप कैसा 50? In everywhere the final answer closing stock है 50 यूनिट्स का, उसका अलग अलग रेट, करेक्ट, अलग अलग रेट हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज 2000 रुपीज, सेकेंड वन इज 1500, थर्ड वन इज 1900, द फोर्थ वन इज 1750. That's all. This is the FIFO and LIFO method, which you were asking me, which you have big things. Okay. Wait. 1 minute. हाँ, अक्षत जैन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैडम इफ देर इज वन मोर परचेज, इसके बाद कुछ परचेज होने से यू विल राइट द परचेज हियर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपने 10 यूनिट्स परचेज किया है 40 पे, तो अभी 4000 आएगा, इसका टोटल लेना है। 60 यूनिट्स है यहाँ पे, 5900 है। सो द वेटेड एवरेज प्राइस विल बी 5900 डिवाइड बाई 60। ये वाला प्राइस हो जाएगा। सो द क्लोजिंग स्टॉक विल बी 60 इंटू दिस 5900 होएगा। Okay. Now let me take your doubts and others take a break. Whoever wants me to answer and take a doubt, please do that and then this will be here.
Okay. Yes, it is very simple. Itna simple. Yes. इंत सिंपल ओके तेलुगु गुड मैम वेटेड एवरेज में है अगर लास्ट में परचेजेस होती है तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं यस वेटेड एवरेज में ये होने के बाद भी परचेजेस है अगेन यू आर गोइंग टू रिपीट द स्टेप इस स्टेप को आप रिपीट करते हो हाउ मेनी अवर परचेजेस आते हैं दैट मेनी टाइम्स यू हैव टू रिपीट Ma'am, for the second question, can we use the perpetual format? Not required, no. If they give you in between, for illustration 3, you can use, but not for illustration 2. Not required. Why are you complicating yourself? Okay? Just know what is that you have asked. Ma'am, can you please side? I want to take screenshot. Divyani, this video will be available in YouTube, no? Then you take screenshot. If I'm going to move this side and that side, I can't answer your doubts. Ma'am, illustration 9 difficult? No. I will be taking the illustration now, that is 9th and 10th one. Okay? Take illustration 3 like this. No, I want you people to try illustration number 3. वहां पे there are 3 batches. Okay? यहाँ पे just 2 batches है. वहां पे 3 batches है. So what is the problem you people have? FIFO method say take in the first one you will take. LIFO method you will come from down. That's all. Weighted average again you will combine everything and find out one average price. Weighted average price. Okay. Nisha Prajapat. So she says, can you understand? I will do 10th illustration also. You don't have to worry. I will definitely do those illustrations and only go. So Nisha has asked me, can you explain the weighted average? Nisha, weighted average means you are taking the weights. So with the rate, if you multiply the units, you will get this weighted average price. So kitna bhi batches hai, utna you have to find out the values first. After finding out the total value, divide by the total unit. So you will get the rate. So weighted average price यहाँ पे 38 है. So in this 38 rupees, you will have to value your closing stock. Okay. When will we use weighted average method in the business? Businesses may usually they follow FIFO method and the weighted average price only. LIFO simple average is not that very scientific, so they don't follow that method. That is practically. Theoretically, question up, whatever they're asking you in the question, please read the question and do that. Okay. Ma'am, when last value comes, we have to put double line or make box to highlighter. Anyhow you do, no? No problem. Is that a doubt for you? Just Noor, weighted average and simple average. Just now I explained weighted average. See, weighted average, simple average, you are talking about the price only. You are trying to arrive at a average price. In simple average, you will take just the price divide by 2. Why madam 2? Because there are 2 purchases here. So I am adding this dividing by 2. Simple average is very simple. But weighted average ke liye, you should find the weights. That is first batch, what is the value? Second batch, what is the value? Isko add karke divide by the total units you will be getting here. Yes, AI array, everything is automated. You people also don't write exam. You also create an AI that will go and write the exam. Okay, Tulsinath. Suppose in this question sale is given, then it is treated. Deepak ji, sales issues बराबर एक ही है. Sales का मतलब ही it is going away from you. Stock आपके पास से जा रहे हैं. But here since raw materials दिया है, ये issues बताते हैं वो word. Sales का भी ऐसा treatment है. See, whenever the question, I will tell you a logic, okay? In anywhere, if the question is big, the answer will be very easy. It is going to be very small. Okay? Divyani, they will give you the method. If no method is mentioned, you can't take any method. They will give you the method exactly. If issue dates are given in between. Yes. Yes, Shivam Vyas, correct. But ma'am, in between we have issued. So what will happen? In between, if you are issuing, you have issued after getting this value, ma'am. Is the till this जसनूर you have to get the value. इसके बाद issue हो रहा है और इसके बाद फिर issue हो रहा है. So whenever you are purchasing, उस सब को compute करके एक value को arrive करना है and then only issues will happen. Okay?
Perpetual or periodic, Akshat Jain. Perpetual, the issues are happening in between. Like after 1st of January, 15th January, there is an issue. Again, there is a purchase on 1st February. Again, there is an issue. So when the issues are happening in between, purchases are there, issues are there. Purchases are there, issues are there. So that will be called as the perpetual. But in periodic, you will have all the purchases given at different dates, but issues together total they will give you. They will not tell you this much is the purchase, this much is the issues in between. They will not give you. Everything will be given to you as total. Everything will be given to you as total. Clear, Akshat? I need 5 minute break because I was completely explaining from the past 1 hour. Okay, just give me a 5 minute break. I'll just drink water. Hmm. You people tell me what is that? What is the difference between simple average? Simple average is not a scientific method, Rachna. Simple average may you just take the average of prices. But technically, what it is, you have few units connected with that. So weighted average is the very scientific method. Weighted average में क्या करते हो? You will just multiply it and get the total value में से you will be able to get the amount. But in simple average, just the amount you just divide by 2. Okay? I will take. Okay, no problem. మ్యామ్ మీరు సూపర్ గా చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. కడియాల కుషాల్. Just give me 2 minutes. I'll drink water and then come back. Yes, Hitesh, correct. Okay, tell me. Hitesh, yes. I think I've taken all of your doubts. If then 2 minutes we'll wait and then yeah, the time doesn't matter in simple average. Yes, Hitesh, very good. Exactly. The time will not matter in the simple average. Yeah, I'm Telugu basically. I'm a Telugu. I've been born, brought up in Chennai, so I know Tamil also. My second language was Hindi, so that's why I'm teaching you in Hindi. And common language is English. Rachana, okay, thank you. Divyani, ma'am, in some questions there are no table, but questions are written only in paragraph form. Then how can we draw a table for solution? In whatever way you understand, you are supposed to clear that and do, no? Divyani, in whatever way the questions are given, if you're able to arrive at the answer, that is enough and important. So you need not do whatever same way it is given in the textbook also. Okay. Could you tell about your CA journey in short? What is there for CA journey? How you people are reading? I also used to read, but better because I didn't have phone. That's all. Simple. Yes, Tulasinath. I'll tell you something, okay? My preparation is not going well. Should I give the next attempt? Or for people who are asking like that, should I skip the attempt? I feel you people should not skip the attempt because presentation is good or not. What do you know? You never know, right? With whatever you have prepared, also you might still be able to pass. So never miss writing anything or doing anything. Take that chance. Take that risk. It is okay. Don't worry. Okay. So, my dear students, at this particular juncture or whatever, the next 2 minutes, no? So apart from the subject, whatever it is, I just wanted to tell few things. Okay. So first thing is cleared in first attempt. Does that even matter? Clearing in first attempt or not? So don't take. This is what I'm saying. This is what I was about to tell you. I should clear in the first attempt. If I don't clear, what will my parents tell?
Parents, okay, you are answerable to your parents. Apart from that, what will my relatives think? What will the other people, neighbors think, and all of that? Don't put so much pressure inside your heads, okay? You have taken up this chartered accountancy course. Do it, enjoy it like it is your passion, and you want to be a CA. That is the first step. I have pressure. I did it because somebody told me. I did it because it was good or something. Yeah, even I entered into this because my father told me. So I was not very passionate or I didn't know what CA was. My father is a chartered accountant. And then when after I finished 10th standard, so he asked me if you want to take science or do or you want to become this. I told, okay, I will take the commerce stream. That's it. So there was no hard and fast rule, nothing. So once I'm telling you, however you end up coming into the course, this is a brilliant course. Okay. So I'm not just telling for the sake of telling it, but technically it's a brilliant course. But the point is you people have to work hard. So hard working is not that you sit and you watch at the clock 8 hours I studied. Oh, very good. I did good. No. Smart work is very, 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 very needed. That too in the foundation, whatever subjects that you're taking, not only for accounts or anything, you have to always set your standard of the paper. Like you have to go through the previous paper. So now again a question will come, ma'am, institute is giving RTPs, institute is giving MTP, so many are there. That look at the textbook first. Okay, take your past question papers, whatever is there, everything is available on your ICAI.org. You need not go anywhere also. Just see, and then you will find out the weightage of the marks. You will be able to identify the pattern. I'm talking about foundation. Okay, after you're able to identify the pattern, then you sit and you understand from the chapter or from the subject. For example, if it is accounts, module 1 में कुछ है, module 2 में कुछ है, totally मिला के 11 chapters है. इसमें से which chapters you are strong, which chapters you are not strong. Okay, the chapters which you are strong, keep practicing again and again. Accounts, the most important point or your weapon is only to practice. If you don't practice and you just read, you can't read something. Even I will tell for theory subjects also, make notes. When you write it, it will get registered 10 times. If you're going to teach it, that is going to get registered 20 to 30 times. Probably I didn't teach when I was studying. If I would have taught, then I would have wrote my exams even much better. Okay. So anytime you are going to sit down, write and practice, there are two benefits of it. One thing, you remember well. The second thing, you will be able to maintain time and the presentation. That is very, very important. Mainly accounts में presentation को marks बहुत ज्यादा मिलता है. Step marks होता है. Clear? So when you're sitting down to read, don't have a lot of pressure or something coming up. So after you identify these are the topics that you are not sure of, start revising. Start making notes. Go from the basics. आप टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपको बहुत सारा फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स में क्लियरेंस मिल जाता है. You will get a lot of clarity. But the point is, you people don't sit and read. You people tell me very honestly, how many of you have read the chapter 1 and chapter 2 theory, whatever has happened in the class? After the class is over, how many of you people went and you have done there? Hmm? You completely read. Okay. Reading out of interest is you read before the class itself. Okay. So many people are very enthusiastic here. Okay. Fun time. If you have not read, my dear students, go back and read. When you read, you get much clarity in the concepts. And accounts is a beautiful subject. Anybody can teach accounts. It's not that only specific people have to teach. No. If it is like costing and something, no, specific people teach in a way that will be able to understand. But accounts, anybody can teach. And if anybody can teach, you also can score really well. So that's not an issue at all. But the thing is, you people have to practice. Okay? Okay. Good. Yes, before the textbook, before the class always gives you clarity. But I'm telling you, you have to go through the textbook after finishing it as well. Is that okay? Ma'am, did you manage the other subjects? Huh? Okay. I managed all the other subjects. In fact, to be very, very, very precise, you should not follow my foundation, my theory, or whatever I practiced. There was an emergency at home, so I couldn't prepare. So I finished my 12th standard boards in the month of March. From April, my coaching started. April and May, I took just the coaching for all the four subjects. Us time mein for us it was CPT, wherein we used to tick 200 questions. No objective marks were there, and I had negative marking also. Okay, so this is how I went inside the exam hall. So exactly the exam was on June
15th, I guess, Sunday may one day exam comes, first Sunday or second Sunday of June. So exactly I had from June 1st till that date only to prepare. I didn't read every day and all. Okay, I am very frank. I didn't read every day and all. But I knew the concepts. When they were teaching, I was grasping in the class. I was concentrating then. So these particular 2 weeks may I did the entire preparation. Max I was not that very sure of. I went out of 200 questions. I attempted 189 because 11 questions I didn't know. That everything from Max I didn't know. Like those 11 questions were from Max. I didn't know. I didn't attempt. I didn't make that thing. So I attempted 189 marks and I got 160, 161, 162. No, 169. Yeah, my marks were 169 out of 200. So that was my journey. So I'm not telling it's something of this sort or that sort. There were people who even worked hard and got much better marks also. So no worries. It's about how you prepare. Mostly some people read during the nights. Most people, somebody read during the mornings. But first thing, my advice to everybody of you will be put your phones aside because now the way I am using the phone, if it was there when I studied CA, I don't think I would have cleared. Definitely no. Please put all your distractions apart and sit and concentrate and study. After you become a chartered accountant, you will have ample time. You can do whatever you want. Okay. Ranker, I am a ranker in CWA. Okay, I finished my CMA also. I was a ranker in intermediate and final. All India ninth rank and All India 14th rank. Okay, so yeah, coming back, that is not important here. Please don't measure anything going by the ranks and all of the things also. Read well. You need to pass. Finally, I'm telling you, people who have got ranks also have not settled well in life, but people who have taken 2 to 3 attempts have really settled well in life. So I've seen all that also. So the attempts won't matter. So for that, don't tell my teacher told attempts will not matter. So I will take so many attempts. No, clearing in the first attempt is always good. But if you don't clear in the first attempt, also it is good. You learn from failures. Okay. So yeah, we are going to go ahead with the last two illustrations. I mean, that particular illustration is, I will tell you. So the illustration, that particular thing, or what we are going to talk about, the ninth and 10th illustration, to see only the question is really, really big, but actually the concept is very easy. Okay. I told you the stock taking of a company. Yeah. The stock taking of a company usually happens on when on 31st of March, they will close everything or they will stop the business and then you will come to count the inventory physically. Correct? Now, sometimes what happens due to the constraint in the time, either I can do before. Don't say 23rd means, madam, you will do on 23rd only. No, I'm just taking for example. Okay. So of 31st March, I know that there is going to be some public holiday or there's going to be some other emergency or I don't have workers that time. So I will just prepone it. Okay. Instead of waiting up till 31st of March, what is there? Let me take before. So on 23rd March, you take the value of the stock, say 100 rupees, you physically count it. But during this period, there will be transactions given to you. So you should consider these transactions and from this value, you should arrive at the value of the stock as of 31st March. That's all. Now you people tell me, my dear students, from this concept, what I told you logically, whatever I was talking to you till now logically, suppose during this period, there is purchases. What do you do with the purchases? 100 rupees is the value of stock. With the 100, should you add purchases or subtract purchases? You tell me. Should you add purchases or subtract purchases? Yes, you are supposed to add because this is addition. It will be there in the stock of 31st of March. Very, very good. Now, what will you do with the sales? You will have to do the opposite. You are going to subtract it. That's all. Only this much, yeah. This is the concept. Nothing more, nothing less. Now I will tell you another part. So purchases, let me say 20. Sales, let me say 30. What will be the value? 100 plus 20. 120 minus 30 is 90. 90 is the value of the closing stock as of 31st of March. Clear everybody? Now let us say 31st March was also not possible. Before 31st of March also it was not possible. So I went into April. So 10th of April only my workers came back after holiday. I ascertained that it is 100 rupees on this value. Now I should go back and find out for 31st of March. Now what will I do with the purchases? You people tell me.
The purchases during this period, was it there on 31st of March? It was there, no. So I have to subtract the purchases. Now next come to sales. During this period, I sold the goods, but those goods were there in the stock on 31st March. So add the sales. So here it will be 110. That is the stock. Clear? If you remember this table, illustration 9, illustration 10 are just simple cakewalks, nothing less. Okay? But there is a small hitch here. Okay, what is that? If it is going to be this simple, it's going to be like ABCD, but you are studying CA. So it should not be like ABCD, but a little complicated version. The complication is also only in your sales. We are finding the cost of the stock. So purchases हमेशा कॉस्ट में ही मिलेगा. दे विल टेल परचेजेस का मतलब है कॉस्ट है, बट सेल का मतलब है सेलिंग प्राइस में दिया है. तो you have to convert the sales into cost of sales. How will you find out the cost of sales, my dear students? You people tell me. Sale will have profit margin. Very, very good. So you have to remove the profit margin. How will you remove the profit margin? I will tell you. Is 30 rupees में से you should subtract the profit. मैडम इसका information कहाँ मिलेगा? इसका information आपको मिलेगा question से. You should read the question. Okay. Now come back here. Another small table I will do and then we will go into the question. Is it clear? Now why madam you have done profit का percentage यानी margin आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कॉस्ट के परसेंटेज. एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट यू कैन राइट और एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑल्सो यू कैन राइट. ओके, नाउ आई विल टेल यू, लिसन टू दिस very I will summarize it, but please listen first, okay? So now coming back, if they say, my dear students, if they say 1/5 on the cost, suppose if they say profit is 1/5 on the cost. Everybody, you first please listen. I am talking about the profit percentage. Okay. I will do that and then come back again here. How to find out profit? If it is going to be 1/5 on the cost, sales may it will be 1/6. Because sale price will always be more. Now you tell me if it is 1/3 on cost, how much will it be on sale? You should add +1 in the denominator. It will be 1/4. Okay, good. Madam, it is 1/5 on sale, madam. So how much will it be on the cost? It will be 1/4. Is this clear, everybody? Everybody clear? So in your question, madam, my question it says 20% on sale, madam. इसका मतलब क्या है? 20/100, nothing but 1/5 on sale. So on the cost it will be 1/4. 1/4 is nothing but 25%. So 25/100, 25. Yes, 25/100 will go 1/4 times. Clear? So, madam, even if they given the fractions or if they given the percentage also, no problem. I will do it. But madam, why did you talk about cost also? In some questions, they might not directly give you percentage on the sale. They will say percentage on the cost. So you should understand what is the percentage. Fraction में convert करने के बाद you should convert it as a percentage of sale and then you should apply it in the question. On the 30 rupees, you should apply profit percentage on sale and then convert it. Find the profit and subtract it. Jasnoor, you are asking me about the 10th April. All of you please see, I am going to summarize once again. 31st March, usually you do the stock taking, but sometimes it might not be possible exactly to do it on 31st March. So you will do either before or either after 31st of March. So madam,
madam, in case I am doing before March, during the period transactions, what should I do? If you have purchases, add it. Why you should add it? Because the purchases are getting added into the stock. On 31st March, the purchases are a part of your stock. वो अभी भी closing stock में है. If there are sales, remove the sales because वो चला गया है business से. It is not there in your sales or your closing stock. So you should remove them. Clear? उसका opposite है. If after March they have done, you find out the stock value after March. Okay. Akshita Singh 33.33 percentage is one third percentage, one third in the fraction. Now you do the remaining. Okay. From 10th April you found out. So before this purchases would have not been there. इस period में आपने purchase किया है. बट 31st मार्च में उस परचेजेस था क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक में? नहीं था. उसके बाद ही परचेजेस हुआ है तो परचेजेस इसमें इंक्लूडेड है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. बट सेल्स वैल्यू आपने हटा दिया बट वो सेल्स 31st मार्च क्लोजिंग स्टॉक में था. सो यू आर सपोज टू एड इट. सो दिस विल बी द ऑपोजिट एंड दैट इज द लॉजिक. और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैंने समझाया. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सिंपल कॉन्सेप्ट. सेल्स शुड बी टेकन एट कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स पता लगाने के लिए यू नीड टू नो द प्रॉफिट. हाउ विल यू नो द प्रॉफिट? The percentages will be given, but that sometimes the percentage can be given even as a percentage of your cost. उस टाइम पे आप सेल्स में कन्वर्ट करना है. इसके लिए इस टेबल को प्लीज कीप इट इन माइंड. 33.33 percentage is 1 by 3, 20 percentage is 1 by 5, 25 percentage is 1 by 4. So convert it like this and if you put also you will get the value. Clear everybody? So with this concept we are going to go ahead quickly with the illustration number 8. No, 9. 8 we finished. Manufacturing cost taken from profit or manufacturing cost included. It will be included in the cost. Everybody. See here we have finished 11th and 12th illustrations also. Now we are going ahead with the 9th illustration. Everybody please see. A trader prepared his accounts on 31st March every year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th of April 2022, on which date the total cost of goods in his godown came down to 50,000. तो इसने लिया है after March 15th April में stock taking किया है, उसका value आ गया है 50,000. Following facts were established between 31st March and 15th April. आपको transactions दिया है, 5 transactions दिया है और सभी सिंपल है. फर्स्ट 3 आर वेरी वेरी सिंपल. ओके. फर्स्ट वन इज सेल्स. 41,000 है इंक्लूडिंग कैश सेल्स. अभी देखो इवन इफ इट इज अ कैश सेल और अ क्रेडिट सेल टोटल सेल्स ही लेना पड़ेगा. तो हियर 41,000 इन टोटल यू विल टेक. ओके. पॉइंट नंबर 3 पढ़ो. देयर इज अ सेल रिटर्न. तो तभी आपको सेल्स रिटर्न्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर देनी चाहिए बिकॉज we have to take only the net sale. So 41,000 minus 40,000 minus 1,000 will give you 40,000. But what you should see, madam, I need only the cost, madam. तो यहाँ पे देखो, it is given the goods are sold by the trader at a profit of 20% on sales. यहाँ पे percentage directly sales में दिया है, madam. तो कुछ भी table नहीं चाहिए. On 40,000 into 20% आपको अप्लाई करनी चाहिए. A point number 1. Okay. So now come here. How to present the statement, madam? Very, very easy. You should write statement showing the valuation or the cost of closing stock as on 31st March. वो होता है statement. And then we will tell you from behind you are coming. So what should you do? So illustration number 9, statement showing value of the closing stock as on 31st March 2022. So you will write the particulars and the amount column. आपको starting point है cost of the stock or inventory as on कितना, what is the date? 15/4/2022, 50,000. इसके साथ what you should add, what you should subtract? You tell me. Purchases you will add or subtract?
The first thing is we have taken sales, correct? So sales ko you should add or subtract. Sales, you tell me? Yes, correct. So first point is add sales. But इसमें थोड़ा सा working note है. What is the working note? 41,000 है sales minus 1,000 है returns. So यहाँ पे एक inner column लिख दो which is 40,000. इसमें से profit को निकालना है. प्रॉफिट का परसेंट डायरेक्टली दिया है 20% ऑन सेल्स. तो इसमें अप्लाई करने से इट विल बी माइनस करके 32,000 विल बी द एडिशन वैल्यू. 32,000 है कॉस्ट ऑफ सेल्स. ओके, आई विल राइट इट हियर. 32,000 मिला है कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो मैंने 32,000 ऐड किया है. डू यू हैव एनी डाउट्स टिल दिस? मैंने सेल्स को कैसे ऐड किया है? What is the amount? Why have you taken 32,000 instead of 40,000? It is because that is the value. Okay, so this is 32,000. Now please come down. Purchases को हम क्या करते हैं everybody? Purchases को हम subtract करते हैं. Purchases में returns है तो उसको भी लेके you please subtract it. Now let us read the question to see if there are any returns. Okay, the first one is, the second point is purchases of 5,000. 5034 including the cash purchases. So I told you irrespective वो cash भी हो सकता है, credit भी हो सकता है. Take the full value. What you should take? You should take the full value. So 5,034 आपको subtract करना पड़ेगा. Is this clear till this? Now there are two other transactions. Let us see what do the two other transactions mean. If you read, that will also be easy. Okay, all of you please see. On 15th March, goods of the sale value 10,000 were sent on sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks. He returned 40% on the goods or 40% of the goods on 10th of April, approving the rest. The customer was billed on 16th of April. So what is the concept of sale on return basis? Everybody, what is the concept of sale on return basis? Anybody? सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है वेरिन आपका प्रोडक्ट बहुत न्यू है तो कस्टमर को अभी तक फेथ नहीं है आपके प्रोडक्ट पे. तो आप क्या करते हो? आपका वो हेवी मशीनरी और उस तरह का प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ. सो उस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके आप क्या करते हो? उसमें उससे यू विल कम टू एन agreement wherein you say I will give you the product to you, you use it for a period. If you don't like it, you can return it back to me. But if you like it, you can have it with you. तो ये होता है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. तो इफ ही अप्रूव्स इट बिकम्स अ सेल. तो इस कॉन्सेप्ट में और व्हाट इज इट आई हैव टू डू विद दिस, यू प्लीज अंडरस्टैंड. 10,000 रुपीज आपने सेल और रिटर्न बेसिस में भेजा है. ओके, सेल और रिटर्न बेसिस में वो भेजा है आपने. उसमें से क्या हुआ है? 40% यानी 4,000 रुपीज वाला गुड्स आपका रिटर्न हुआ है. ही हैज ऑलरेडी रिटर्न्ड. तो इसका मतलब है ये वाला 4,000 आपका स्टॉक में ले लिया है ऑलरेडी. क्या हुआ है? 10th ऑफ अप्रैल आ गया है ये स्टॉक. तो 15th ऑफ अप्रैल आप जब कंप्यूट कर रहे हो, यू हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड द 4,000 बिकॉज वो आ गया है वापस. ओके, ओवर. नाउ ये 60% का क्या हुआ है? व्हाट इज द 60%? व्हाट हैज हैपेंड टू द 60%? रिमेनिंग गुड्स उसने अप्रूव किया है. करेक्ट. सो द मीनिंग इज व्हाट? इट विल बी ट्रीटेड लाइक सेल्स. क्या? How it will be treated? It will be treated like sales. आपने sales को क्या किया है? What you have done with the sales here? You have added it. अभी भी you will add ADD. Sale on approval or return basis.
How much you will add? What is the 60% value? 6,000 rupees है value, madam. But ये है sale value. But I need the cost, madam. Cost of sales. Same logic I should apply here also. वो होता है 6,000 minus 20 percentage. Why, madam, 20 percentage? Because all sales are uniformly done at a profit of 20% on sales. That is given to you where, madam? Question में दिया है. So it will be 4,800. Is this clear, everybody? Any doubts you have? Akshit Verma, why you have added sales subtracted means that's the basic. No, that's what I've taught you in the between. Sales you will add because you are going back. You need the value of stock on 31.3. From 15.4 if you are going back, sales you should add because they will be having it in the stock. सो इन बिटवीन पीरियड का सेल्स हुआ है वो 31st में उसका स्टॉक में यू आर हैविंग नो सो दैट विल बी इजी सो दैट इज व्हाई यू आर एडिंग द सेल्स बट परचेजेस इट इज कमिंग आफ्टर दैट करेक्ट आफ्टर 31st मार्च वॉट एवर यू परचेज विल इट बी देयर ऑन 31st मार्च वो होगा उसमें नहीं सो इट इज द ऑपोजिट yes valuation opposite rules apply when valuation of inventory next year. Yes, correct. You can take it like that also, Deepak. Is this clear? I want everybody to give me a heads up, then I will go. Clear? Okay, perfect. Abhi, we will be doing the last entry, which is a very, very easiest entry. Everybody, please see. A trader also received, the trader, तो इसका business में he has also received goods costing 8,000 in March. ये है क्या? 8,000 in March है, वो cost में दिया है, तो ये sale value नहीं है. For sale on consignment basis. Consignment का मतलब क्या है? Consignment का मतलब है, I will tell you what is consignment, okay? Out of which 20% of the goods have been sold on 31st of March, another 50% by 15th April. These sales are not included in the above sales. Okay. So coming back to the point, everybody please see here. Consignment का stock का मतलब है आपका खुद का stock नहीं है. Somebody else's stock you are receiving with an arrangement to sell the stock. Okay. You are receiving it with an arrangement to sell the stock for their behalf. ये वाला समझ में आ गया है? ओके. सो अब कंसाइनमेंट बेसिस में जो स्टॉक को रिसीव करते हो उसका अकाउंटिंग सेपरेट में रखनी चाहिए. वो स्टॉक आपका स्टॉक है. कंसाइनमेंट का स्टॉक का ओनर आप नहीं हो. किसी और का स्टॉक आप ट्रस्टी बेसिस में एक बेली के पर्पस में रखते हो और यू विल सेल एंड देन गिव बैक द मनी टू हिम. इट्स लाइक एन एजेंट. करेक्ट. परफेक्ट. सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स 8,000 रुपीज का स्टॉक मिला है इस ट्रेडर का. देन व्हाट हैपेंड, उसमें से वो कितना सेल किया है? 20% सेल किया है, 50% तक सेल किया है. द मीनिंग इज 8,000 रुपीज में 20% प्लस 50% का मतलब क्या है? 70% स्टॉक सेल्स हो गया है. और सेल्स को इंक्लूड हुआ है क्या आपका सेल्स में? नहीं. दैट इज द राइट थिंग टू डू. करेक्ट? Yes, it is done. So now what is there? Out of 100 he has sold 20 percentage, 50 percentage हो गया. फिर भी अभी भी बाकी कितना है? 30 percentage of the stock is there. 30 percentage of the stock is still there. So what should I do? Madam, 8,000 में 30 percentage है, फिर closing stock, but इस क्लोजिंग स्टॉक आपका है? इज इट योर क्लोजिंग स्टॉक? नो. बट दिस क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूडेड इन 50,000 बिकॉज स्टॉक टेकिंग किया है 15th अप्रैल में. उसके पहले 20% सेल हो गया है, 50% सेल हो गया है, तो वो स्टॉक इसमें नहीं आएगा. बट वॉट एवर स्टॉक इज रिमाइनिंग अनसोल्ड वो स्टॉक इसमें इंक्लूडेड है अभी भी. सो वॉट यू आर सपोज टू डू, you should subtract the unsold consignment stock.
ये वाला even if it happens on 15th of April or it happens before that, इसका minus ही होगा always, because consignment stock आपका stock नहीं है. You should subtract it. What is the value? Can somebody tell me? 8,000 into 30%. Q madam, 30%, 70% already sold. So 2,400 you should subtract it. That's all. Question is over. Any doubts you have? Can somebody tell me what is the value at the end? What if after 15th? After 15th also this is the effect. 79,366. Correct? Everybody got this? So this is the last line you should write, not value. Cost of the closing stock as on 31/3/2022. If you want, you can write. Otherwise, you have written on the heading also, no, the same thing. That's it. Any doubts? So now you understand how easy it is, even though it is, ma'am, fifth part. मैम हमने फिफ्थ पार्ट वाले सेल को रिकॉर्ड नहीं किया है. हाँ, फिफ्थ, see what is the point is fifth वाला पार्ट में सेल नहीं रिकॉर्ड किया है. ओके, सो कमिंग बैक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, सेल्स हुआ है, सेल्स हैज बीन डन, बट ये वाला स्टॉक कंसाइनमेंट का सेल्स है, आपका सेल्स नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ भी मत करो, इग्नोर कर दो. क्या करना है, अभी भी कंसाइनमेंट का स्टॉक, किसी और का स्टॉक आपके पास है, वो जो आपका स्टॉक नहीं है, तो यू आर कंसर्न्ड ओनली विथ रिमूविंग द क्लोजिंग स्टॉक. ओके, yes, like this only you have to write even in exam. That is why I am putting it like this. No, you should write it like this only, exam mein. Clear everybody? Any doubts? Owner of the goods sends goods to the other party. Yes, correct, ma'am. How do we know that it is included in the stock that 40%? X. This is a very good question, Akshita. Okay. Okay. So coming that not 40% of the sale on return and not 2,400 of the fifth one. How do we know that it is included in the stock or not? That 40% of the sale, because when they say that it is returned, it is implied that it has been taken into the stock. If not, they will tell you the 40% has been omitted to be taken into the stock. Then it will be like that. And the 2,400 of the fifth one. What is 2,400 of the fifth one? Here also, if they talk about the consignment basis, it is an implied meaning that it is already in the stock. So that is why they told you specifically sales are not included. But did they talk about the closing stock being included or not? In that case, always consignment basis may, whenever there is a unsold stock, it means that it is included in the stock which you have to remove. Clear? Akshita Singh, now it is clear. Good sale on return basis but not approved, then we add as the closing stock. Yes, that is your closing stock. Correct. That also you should add it with the cost price. Okay. Deepak Garg. मैम ये लास्ट वाला माइनस कैसा हुआ था निशा? बिकॉज इट इज द क्लोजिंग स्टॉक, किसी और का क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए वी हैव इंक्लूडेड. क्लियर एवरीबॉडी? कैन वी गो अहेड एंड डू द लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10? Yes. Okay. Illustration number 10 also is of a similar fashion. Actually, that is much easier than this. Okay. You don't even have sale on approval. You don't even have consignment basis. It is just reduction in the cost of the stocks. So I will explain it that also to you. So somebody was asking me, I think Akshat Jain, will you be able to complete inventories, madam? Only 2 classes are there. I told you, I promised you, and I completed. I want you people to try the illustration number 3 as a homework, which I've already taught, which is the perpetual system. Okay, 3, 4 already we did. That is a simple average price. Illustration 3 and 5, I want you people to try. Okay. Okay. It's a big question, but it is a very, very easy question. Just big to scare you people. That's it.
All of you, the next 10 minutes, please concentrate. We will finish this and then go. Illustration number 10. We are going to break and read. Inventory taking for the year ended 31st 22 was completed on 10th of April. So it is done after, which showed a valuation of inventory of 16,75,000 at cost as on the completion date. Okay. After the end of the accounting year until the date of completion of inventory taking, sales for the next year was made at 68,750. Profit margin being 33% on cost. 33 का मतलब क्या है? 1/3 on cost है. Then what about the sale? How much will it be on sale? If it is 1/3, 1/3 on cost, it will be 1/4 on the sale value. Is this clear? The first conversion you people have done already. The cost of the goods as on which April? It's on 10th of April. 10th April 2022 is 16 lakh and 75,000. Now first point is the sales. Sales आप add करते हो या subtract करते हो? You should add the sales. Okay. So sales is given to you, and please see here. During this period, goods were added to the inventory at the markup price of 3,000 in respect of sales return. ये क्या है मैडम? Markup price सब कुछ दिया है. Simple. वो sales returns है, वो sales value में दिया है. So please see here 68,750 minus 3,000 returns. Okay. So 65,750. Now कितना है profit? Profit मैंने बताया है, it is given as 33.33% on cost. So 1/3 on cost होता है, 1/4 on the sale value. Now 1/4 on the sale value is nothing but how much? 25% of this. Can somebody tell me how much is 25% of profit in this? 25% of profit on 65,750. I know it will come in points. You immediately don't have to worry. You just tell me what the answer is. 16,437.5. I will take 438. Now can you tell me the balance answer? Everybody, Shivani, Tulsinath and Sangram. The others I want to try. I want you people to try. Good Deepak then. Can you tell me what the answer is first? The cost of sales comes to, when you subtract, it will be 2, 1, 3. This will be 9. 49,312. Okay, perfect. Yes, I got this. Sales is over. 3,000 is sales return. Yes, Negimi. The wordings are a little difficult. See, the wordings are a little difficult, but 3,000 is sales return. During this period, goods were added to the inventory. इसका मतलब है goods return हुआ है, and that you have taken it into the inventory at a markup price. Markup price is nothing but sale price. That's all. Okay. Now please see here, come before. Purchases for the next year in the inventory amounted to 90,000 less trade discount. Purchases को क्या करना है? Purchases को हम subtract करना है. But here purchases में क्या है? Trade discount है minus 10%. So 90,000 minus 10% will give me 81,000. I have to subtract it. Why madam 10% हम subtract कर रहे हैं? This is your trade discount. Yes, everybody? You understood? The second line is about purchases. So purchases को हम क्या करते हैं? We are going back from 10th to 31st. So purchases को हम subtract करते हैं. But which value we are going to subtract? It is less the trade discount. So value है, उसमें trade discount भी दिया है, तो हम वो subtract करके लेते हैं. Till this it is clear. It is a normal question. Sales है, sales returns है, और purchases भी है. Clear? Now we are coming to this particular value. Please see here. After inventory taking, it was found that there are certain very slow, old moving items costing 11,250, which should be taken at 5,250 to ensure disposal into a interested customer. इसका मतलब क्या है? जब हम stock taking करते हैं, we identify some stocks as slow moving stocks or non moving stocks.
ऐसा कुछ हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल बदल गया है, यानी कस्टमर का प्रेफरेंसेस बदल गया है. Due to any of the reasons, change in the customer preferences or change in the other events, there will be few stock for the business which it cannot sell. The value would have fallen down. Similarly, in this case also, there is a slow moving inventory जिसका वैल्यू आप अभी कम करनी है क्योंकि वो स्लो और ओल्ड मूविंग आइटम हुआ है. तो कस्टमर पूछ रहा है 11,250 उसका वैल्यू, आई विल नॉट गिव. वो उसका वैल्यू अभी मैं दे, आई विल गिव यू ओनली 5,250. तो व्हाट इज दैट? A reduction in the value of the goods for a slow or non-moving items. Whatever date you do the stock taking, you should subtract it because ये वाला वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ये तो हुआ है लॉस. सो नॉन मूविंग आइटम का रिडक्शन, नॉन मूविंग एंट्री का रिडक्शन वैल्यू कितना का? 11,250 था ओरिजिनल वैल्यू, बट अभी इसका वैल्यू फॉलन टू 5,250. तो 6,000 रुपीज आपको लॉस हुआ है. क्यों? कोई भी रीजन हो सकता है. इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, बट वॉट यू शुड अंडरस्टैंड, ये बात आपको समझ में आना है कि नॉन मूविंग आइटम का वैल्यू रिड्यूस करने के लिए यू शुड सबट्रैक्ट इट. दैट्स ऑल. As simple as this. And the last point I'm coming to, everybody please see. Due to a heavy flood, certain goods costing 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer. As a result, the customer refused to take the delivery and the net realizable value became 12,500. ये भी कुछ इंसिडेंट हुआ है. आप सप्लायर से एक डेट में कुछ गुड्स को मांगा है, बट फ्लड्स के वजह से सप्लायर उस टाइम पे सप्लाई नहीं किया, टाइम के बाद डिलीवरी दे दिया. तो क्या हुआ? कस्टमर अभी बोल रहे हैं नहीं, डिलीवरी डेट के बाद देने से यू शुड रिड्यूस द प्राइस, मेरे को लॉस हुआ है तो रिड्यूस द प्राइस. सो ये भी रिडक्शन इन द वैल्यू, क्योंकि कुछ मिस्टेक हुआ है, डिलीवरी डेट को क्रॉस किया है. सो इफ the customer told date of delivery very important, so the date of delivery was not done, so reduction in the price he is asking. You fail to meet your demand, that is 15,500. Give me a discount now. How much? 15,500. Now I will take it only at 12,500. So subtract this. That's all. This is the question. Simple, no? So this is 90,000. I have to subtract this one. So 15 lakh and 85,000 minus 49,312. 88 will be 965 minus 916. 7 minus 4, 3. 15 lakh 36. Oh, this is add. I am sorry. Okay, 16 lakh 34,312. So please write the last line. Cost of the stock as at 31/3/2022. Okay, just let me take your doubts before I close. So like an abnormal loss, yes. मैम अगर कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट यहाँ पे it will not come. Anything trade discount only will come because you're talking about stock. Necessary to write those small figures. Yes, we need to write. प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट. सी दीपक गार, क्या हुआ है, एक कस्टमर ने पूछा है बाय 10th of April प्लीज गिव मी दिस पर्टिकुलर गुड्स, बट ड्यू टू हेवी फ्लड्स व्हाट हैज हैपेंड, वी वर नॉट एबल टू, हमको सप्लायर नहीं दिया है उस गुड्स को. सो विद इन द टाइम व्हेन यू डोंट रिसीव द गुड्स एज अ पेनाल्टी क्लॉज or like the customer is not satisfied, so he now tells me you have given it after the date. So what is happening here now? To benefit and for you to sell to the customer, you're supposed to sell, but what or how will you do or how you can do? Give him a discount. So that 15,500, now the customer, due to the delay in the date of supply or the delivery, he is telling I will take only at 12,500. Okay. Last second wala, this is nothing but there is a slow or a non-moving stock
whose value you have to reduce now. क्यों reduce करना है? Because the actual disposal value, there is a customer who is interested to take, but not at 11,250, but उसका value अभी हुआ है 5,250. तो stock में 11,250 है, उसको 5,250 तक लेके आने के लिए you are supposed to subtract the 6,000. Okay? In sales, it should be add 51. What 51 you should add? Which one are you telling? I didn't understand, Prabhat. It should be add this one, 68,750. नॉन मूविंग आइटम वो होता है जिसका डिमांड अभी कम हो गया है, तो वो लाइक द अदर गुड्स वो अभी थोड़ा फास्ट में नहीं सेल हो रहा है, तो वो स्लो मूविंग है और आपका गोडाउन में वैसे ही पड़ा है. ओके. See, first point add sales is, yeah, this you have to add, but subtract this because it's the profit. See, Prabhat 65,750 है total sale का value, but you should consider the cost of sales, due to which you should remove the profit. तो इस profit percent को हम कैसे arrive किया है 25%? They have given you 33.33% on cost, which is nothing but 1/3 on cost. मैंने उस table में आपको बताया है, if it is 1/3 on cost, it will be 1/4 on sale, which is 25%. So इसको रिमूव करने के बाद 49,000 you should add. How will it be 51,560? It is 49,312 only. Okay. Yes, just Noor, ma'am, in exams, mainly questions after 31st one will come. I mean, is there chances of coming questions where closing stock valued? Yeah, it will be there. You can have this also, you can have that also. If you understand this concept, if it is done before that, do the reverse part of it. Okay? अगर इलस्ट्रेशन 9 में पॉइंट में रखता है कि सेल्स आर इंक्लूडेड, देन व्हाट विल वी हैव टू डू? संदीप, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आप क्या करना है ना, आपका सेल्स में से उस पर्टिकुलर 70%, दैट इज 8,000 इंटू 70% का कुछ वैल्यू है ना, उसको भी यू शुड सब्ट्रैक्ट इट. दैट इज द मीनिंग. Ma'am, your answer and book answer is not matching because what they have done, 68,500 mein they applied this 25% and they kept it here. And then what they have done is under the less category they have done, and from the 3,000 they have subtracted and kept it here. But what I have done, since that is the sales returns, I have directly subtracted and taken the value. So there'll be a little meager difference, so you don't have to worry. Clear, everybody? Ma'am, this value of closing stock, it is at cost price, Hitesh, because we have found out everything as cost of sales, purchases that cost, non-moving item का cost ही हम reduce किया है, और this reduction in the price is also at cost only. Akshit Verma, Shivam Vyas, that is the point why it is not matching. You don't have to worry. 33.33% को हमने round off करके 1/3 on cost ले लिया है. Is this clear, everybody? So the time is 1:15. I think with this we have completed the chapter. I want you people to now try illustration number 3 and illustration number 5 and your practice questions, all the 4. Since there is constraint of time, I will try to do those particular practice questions to both the things and try to upload it as notes. Okay? Okay, Hiranmay. Yes, thanks, here. Priya. Yeah, hi. Back today. Hi. Thank you, Hiranmay, for all the session. I think we have already completed this chapter, the whole chapter, right? We'll be starting with the new chapter for the next class. Correct. For this. In case if you get time for the illustration which we have left, you give 10-15 minutes at the end of that session. In case if you get time, see as per your probability. Okay. Yeah. Another thing, this chapter has been completed, students. This is a very important chapter, prime importance chapter. We get many times, 90% of the times we get this question from this inventories chapter, and all illustrations are equally important for this chapter. See, not only the illustration, the theory part is also important. See, before this attempt, the January 2025 attempt, we get a question for the calculating the value of inventory using weighted average and FIFO method. The question was very simple to calculate, weighted average and FIFO method, but they have given some cost also. The costs were like the administration cost, storage cost, whether these warehousing costs, whether these costs are to be included, at what level they are to be included. That was the point that has to be taken care of. For that, you need to study through your theory part also. So where the theory part has specifically mentioned what are the exclusions for the value of inventories.
right? For example, whether the storage cost is included, whether the administration cost, the costs which are indirectly attributable will not be included. They are all excluded in the cost of inventory. So in that ways, you have to calculate your value of inventory using these methods. So such points are also equally important. Kindly go through the theory portion as well, along with all the practical questions. All the practical questions are equally important, and in one way or the other way, the question comes from on the concepts based on the study material itself. All right. So, is there anything else, Hiranmi, to let the No, students? Priya, there are two things, okay? Point number one is they're asking for the notes to be uploaded, okay? So whether the notes That have has been been up, uploaded. They'll yeah, be checking it, and that has been okay. uploaded. And Yes. number two, there was one or two students who messaged me on the first day asking them their number to be added to the WhatsApp group. I'm not sure if Yes, they're there yes, yes. now. We'll Yeah, share the WhatsApp group in the law class also, or in the other class also. We'll be sure, sharing the sure. WhatsApp group Okay, for okay, sure. done. Okay. All the Yeah. very best, students, and please keep going through the classes and do the homework. As your ma'am has already told you, the illustration that has to be done by you. And please come prepared in the next class. And one All the minute before closing, this Akshit Verma has asked one doubt. See, in the book, this particular 3000, no, what has happened is he has taken the 3000 separately here. So 3000 minus 25%, if you're going to do, how much will you get? 2250. That he has taken here separately and he has done. What I have done is I have directly subtracted the returns from here and I have taken it here. Clear? Okay. And okay. what is All right. Sandeep Thakur, your doubt? My mail ID, yeah, I will tell you 1 minute. ओके मैम ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा होगा एनआरवी इज ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट नो होगा जब एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन संदीप वेट आई विल जस्ट अनम्यूट यू वेयर ही हैज गॉन See, always technically, no, technically talking about any business will try to do the sale at a higher value than the cost. Cost 100 है, तो वो sale 100 के ऊपर ही कर सकता है. He will try to do all means to sell it more than 100 rupees only. Okay, but sometimes NRV can be lesser than the cost price. इस तरह का. This is what slow moving. The actual value or cost is 11,250. बट हमने रिड्यूस किया है 5,250 तक. अब ये बन जाता है इसका न्यू एनआरवी. सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर अस इन केस ऑफ अ स्लो मूविंग और अ नॉन मूविंग आइटम व्हेन द एनआरवी becomes lesser than your cost. Okay. Okay, is that clear everybody? So can we close the class? Sandeep and the other person Yes, Akshit yes, Verma, yes. have you all understood? Okay, perfect. Thank you. Okay. Okay, my mail ID. All right. Thank you. Thank you. Priyamvada, just 1 minute. They're asking for the mail ID because they wanted to ask for some doubts. Is it okay if I give the mail ID? Mhm. My mail Yeah, ID? yeah. Yeah, Either okay. if you can, they can share their. Okay. Yeah, I'm just writing it up so it'll be easy, right? You people can write. I can take your doubts here. Hiranmai, HIRANMAI dot Venkat at the rate gmail.com. Yeah. Thank you, everybody. Nice meet you in the Thank you. next class. Thanks, Priya. Bye. Thanks. Bye bye. Yes, Yes. yes.